What's wrong with the society, sir? मतलब इतने violent crimes against women. 16 दिसंबर की रात 9:15 से 10:15 के बीच बस में लड़की से दुष्कर्म किया गया। I would say that there is something wrong with certain people, certain groups of has people. complained that she was raped at the Shakti Mills compound. And unfortunately, even some statements by politicians, others, which is very irresponsible. यही लड़के हैं, गलती हो जाती है। एक बार एक मर्डरर भी रिफॉर्म हो सकता है, बट एक रेपिस्ट रिफॉर्म नहीं हो सकता। I would agree partly with that. Rape is not a disorganized crime. Most often it is premeditated and it is also organized. कैसे हमारा जो पूरा लीगल वे है ऑफ डीलिंग विद दीज क्रिमिनल्स इज वेरी रिएक्टिव एंड इट नीड्स टू मूव टू प्रिवेंटिव। अबाउट दैट लेट्स टॉक अबाउट हमें क्या रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, लीगल रिफॉर्म्स, प्रिजन रिफॉर्म्स एंड द वे वी डील विद दीज पीपल। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो एक बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट पे है, पर ये सब्जेक्ट उतना ही इम्पोर्टेंट भी है। आज से 1.5 महीने पहले हमारे देश में कोलकाता रेप और मर्डर केस हुआ था और उसने हमारे देश के लॉ एंड ऑर्डर की और विमेंस सेफ्टी इश्यूज की पोल खोल के रख दी है। हमारे देश में वायलेंट क्राइम्स तेजी से बढ़ रहे हैं और उनका वायलेंस भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे वायलेंट क्राइम्स के बारे में, इनके पीछे के साइकोलॉजिकल फैक्टर्स समझेंगे और जानेंगे कि हम इन्हें कैसे रोक सकते हैं, इसमें हमारा क्या रोल होगा। हम विक्टिम्स के बारे में बात करेंगे, समझेंगे कि उन्हें हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं कि वो एक नॉर्मल लाइफ वापस जी सके। और इस सब के बारे में बात करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर राजत मित्रा। With over 30 years of experience as a clinical psychologist, he has worked extensively with law enforcement agencies in dealing with various violent crimes. He has worked extensively with trauma survivors, with victims of such crimes, and also been a part of many sexual harassment committees. तो इस सब्जेक्ट पे बात करने के लिए let's welcome Dr. Rajat Mitra to the Momcast. Welcome to the podcast, Dr. Mitra. Yeah. Thank you so much for being here, sir. My pleasure. Yeah, let's just dive straight in. और एक सवाल है जो मुझे खुद को बहुत दिनों से परेशान कर रहा है कि What's wrong with the society, sir? मतलब इतने violent crimes against women. मतलब violent crimes तो होते हैं, बहुत ज़मानों से होते आ रहे हैं, but violent crimes against women is like, it seems to be increasing and getting worse. और ज़्यादा violent होते जा रहे हैं। ऐसी सोच दिखाई देती है जैसे you couldn't expect कि कोई इस तरीके से सोच भी सकता है। So why are these crimes happening? Are they on the rise या सिर्फ हमें ऐसा लगता है कि ये crimes बढ़ रहे हैं? क्या हो रहा है यहाँ पे? I think 2 reasons हैं। एक तो ये कि ये definitely जो है बढ़ रहे हैं, they are rising. That's one. Secondly, also is that they are being recorded more. You know, जैसे there is often a statistics shown that in the last 60 or 70 years they have risen almost by 700-800%. But once upon a time, sexual assault crimes, they were not recorded at all. Even when I started working, people would be sent back and said that don't make a case, it's no use doing that. So it is only because of the judicial pressure and societal pressure, activist groups, that cases started getting recorded in the last 20 years. But it was before that also violence, and particularly heinous kind of violence did exist. It was not that it didn't. But obviously, there has been a change of late. So your question was that what is wrong with our society? I would not say there is something wrong with our society. I would say that there is something wrong with certain people, certain groups of people, right? And the very fact that we are shocked by it, you wonder कि ऐसा जो है क्यों हो रहा है. That also shows that जो society में है, एक conscience है, एक वो feeling बाकी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए. तो दोनों reasons हैं, बढ़ भी रहे हैं, और जो heinousness है, जिसको हम कहते हैं कि atrocity on the victim, तो वो definitely उसमें एक बढ़ोतरी हुई है. और वो इसलिए कि जो प्रेजेंट सोसाइटी है वो
उसमें डिटैचमेंट बहुत बढ़ गया है. Crime जो है, it has been linked to the rate of attachment or bonding that we have in the society. The more there is जितना detachment बढ़ जाएगा, उतना ही heinous nature of crime जो है वो बढ़ जाता है. This is according to psychological theories. Detachment का मतलब होता है कि जैसे हम इंसान को वस्तु के रूप में देखते हैं, जैसे राइट। हम इंसान को इंसान के रूप में नहीं देखते. तो ये भावना हाँ। जब बढ़ जाती है, तो उससे क्या होता है कि जो हम एट्रोसिटी कमिट करते हैं दूसरे के ऊपर, वो भी बढ़ जाती है. और ये बात हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो सेक्सुअल असॉल्ट है, वो इट इज़ अगेंस्ट नेचर. इट इज़ अगेंस्ट. सो जब मैंने मैंने बहुत सारे ऑफेंडर से बात की है. Many of them, they have this temporary feeling of disgust, of hatred, because they say that we went against they have this feeling that we went against nature, and therefore this feeling was produced in them. So in order to deal with that disgust, they bring it out on the victim's body. They bring it out in the crime scene. So that is, वो जो है हम वो अभी ज़्यादा देख रहे हैं, जैसे निर्भया केस में या कैलकाटा मेडिकल केस में जिस तरह की एट्रोसिटी हुई है. इट शोज द पैथोलॉजी ऑफ द ऑफेंडर जिन्होंने इस क्राइम को कमिट करा. तो ये पूरी सोसाइटी के साथ नहीं है, लेकिन सोसाइटी में एक वर्ग के साथ है, एक सोसाइटी में एक ग्रुप के साथ है, जो डेफिनेटली बढ़ रहा है. तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय है. सर, सो मच टू अनपैक देयर. आपने एक आंसर में इतनी सारी चीज़ें बोली हैं जो मतलब इन बिट्स एंड पीसेस वीव हर्ड. ये सुना हुआ है कि हाँ, सोसाइटी में डिटैचमेंट बढ़ रहा है, राइट. लोग एक दूसरे को ऑब्जेक्ट्स की तरह देखने लगे हैं, इंटरपर्सनल कनेक्शंस कम होते जा रहे हैं. बट समथिंग लाइक दैट कैन ट्रांसलेट टू सच Sure. वायलेंट क्राइम. ये अंडरस्टैंडिंग मुझे पर्सनली तो बिल्कुल नहीं थी. क्राइम एंड के लिए डिटैचमेंट होना ज़रूरी है. जो ऑफेंडर है ना, अच्छा. to kill someone, to commit a heinous crime, you can never kill or you can never commit a sexual assault on a human being. You can only do it on an object. एक object को, एक वस्तु को आप कर सकते हैं. तो ये जो डिटैचमेंट है, ये बहुत ही एक्सपोनेंशियल वे में, जिसे हम कहते हैं, समाज में ये बढ़ रहा है. और ये सिर्फ मैं बोलूँगा कि भारत में ज़्यादा मतलब बढ़ रहा है, लेकिन दुनिया के बाकी देशों में भी कम नहीं है. वहाँ भी बढ़ रहा है, पीरियोडिकली बढ़ता है. अमेरिका में बहुत ज़्यादा जो है डिटैचमेंट है. अगर आप वहाँ पे देखें तो जो एट्रोसिटी होती है वुमेन के ऊपर आफ्टर अ सेक्सुअल असॉल्ट, it is sometimes as heinous or far more heinous compared to India. Okay, so मतलब ऐसा नहीं है. या अगर साउथ अफ्रीका में देखें, वेनेजुएला में देखें, या यूरोप में भी देखें, एट्रोसिटीज बढ़ रही हैं. एंड द वुमेन्स बॉडी इज एक्चुअली टेकिंग द ब्रंट ऑफ इट इन द वर्ल्ड टुडे. तो बेसिकली ये जो बात होती है, द ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन, हाँ जी. इट्स नॉट जस्ट समथिंग जो जो बॉलीवुड में होता है. नहीं लाइक नहीं. इट्स अ थिंग सोसाइटी में, इट्स एक्चुअली हैपनिंग. डिटैचमेंट की Sure. वजह से वी सी पीपल एज ऑब्जेक्ट्स एंड वुमेन बीइंग अनफॉर्चुनेटली Sure. परसीव्ड एज द वीकर सेक्स. तो Sure. उनका ऑब्जेक्टिफिकेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है बाय Yeah. द अदर सेक्स. ये जो है, ये ये एक एक्सपीरियंस है जिसके थ्रू जो है हम हमारा एक वर्ग जो है वो बड़ा हो रहा है. तो जो हु सीज वुमेन एज ऑब्जेक्ट, जो उनको वस्तु के रूप में देखते हैं, और ये हर वर्ग के साथ है. ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये लोअर सोशियो इकोनॉमिक वर्ग के साथ है. और जहाँ पे भी ये दृष्टिकोण हम मतलब में चेंज लाते हैं, बदलते हैं, तो वहाँ पे जो है सेक्सुअल क्राइम्स डेफिनेटली जो है वो कम हो जाता है. मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ. दिल्ली में एक Yes. पुलिस प्रोजेक्ट है जो चलता है परिवर्तन नाम से. तो वो डॉक्टर सागरप्रीत हुडा ने शुरू करवाया था, और मुझे जिम्मेदारी सौंपी थी इसकी कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली बाय द वे एट वन टाइम हैड द हाईएस्ट रेट ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट इन द कंट्री. हाईएस्ट. तो माइग्रेंट्स थे एरिया में ज़्यादा, जो भारत के दूसरे
प्रांतों से आए कोरिया थे। से काम करने आए होंगे। हाँ, और Yeah. वहाँ पे और भी 2-3 क्वालिटीज़ थी। जो घर थे, दे वर वन ब्रिक होम्स। तो जो लड़कियाँ थी उनके लिए स्कूल जाना बहुत इम्पोर्टेंट था, बिकॉज़ दैट वाज़ द ओनली टाइम दे गॉट फ्रीडम, स्कूल जाके। और जब वो स्कूल जाते थे, इट वाज़ अ टेरिबल ट्रॉमेटिक टाइम फॉर देम, बिकॉज़ दोनों तरफ बसेस खड़ी होती थी, सारे ट्रांसपोर्टर्स के बसेस होते थे, कंडक्टर्स, ड्राइवर्स होते थे। Very often, they would expose themselves or do other things. Sexual assault was high. When a concerted program was done with police public participation over a 3-year period, जो है, the sexual assault and other sexual crimes did go down by almost 17%. You know, सो ये जो है, अगर हम उसको शिक्षा के रूप में या साइको एजुकेशन के रूप में देखें, लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी, इन द ग्रोइंग अप ईयर्स, तो ये एक परिवर्तन जो है आ सकता है इसमें। तो 17% इन 3 years तो काफी बड़ी बात हाँ, होगी। तो ये एक्चुअली मैं भी उसमें डाटा में जी। शामिल था, और मुझे मालूम है, बिकॉज हम साइमल्टेनियसली पुलिस के साथ काम कर रहे थे, सो द डाटा वाज क्वाइट एक्यूरेट। और सर हाँ, बताइए। सर अगर आप बता पाए लाइक व्हाट स्टेप्स वो अंडरटेकन, क्या काम ऐसा किया गया जिससे इतना फर्क आ गया 3 साल में? अ, अ, काम तो बहुत सारे थे, लेकिन 2-3 मुख्य वो थे। एक वो था कि जो लड़कियां थी स्कूल्स में या कॉलेजेस में, उनको एक करेज मिला, एक हौसला मिला अपने क्राइम्स रिपोर्ट करने का। तो उनको हमने सिखाया कि कैसे आप क्राइम रिपोर्ट कर सकते हैं। उनके माता पिताओं को बताया कि अगर आपके बच्चों के साथ हो रहा है, चुप मत रहिए। एक तो ये था। दूसरा ये था कि ये जो पेडोफाइल्स होते हैं, या जो मतलब बच्चों को या उनके तरफ जो सेक्सुअल वे में उनको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, ये स्कूल्स पे, कॉलेजेस पे, पार्क के उस तरफ काफ़ी घूमते थे। तो ये पुलिस में ट्रेनिंग हमने दिया था कि कैसे उनको स्पॉट करना है। तो उन्होंने स्पॉट करना शुरू किया, और फिर उनको जाके जो है पुलिस थाने में बुला के, दे स्टार्टेड टेलिंग देम दैट लुक, आई मीन, यू आर अंडर सर्वेलेंस, अंडर वॉच, डोंट डू दैट अगेन। तो उससे जो है तीसरा खत्म हुआ, दूसरा फैक्टर। तीसरा वो था कि जो वहाँ के लड़के थे, उनमें एक जेंडर सेंसिटिविटी ट्रेनिंग जो है बहुत स्कूलों में, बहुत जगह पे दी गई। तो उससे भी जो है फ़र्क पड़ा। तो 3 एंड्स पे, एक तो मेक द वुमेन मोर करेजियस, एक है डायरेक्ट एक्शन ऑन द पेडोफाइल्स एंड सेक्सुअल ऑफेंडर्स, आइडेंटिफाइंग देम एंड प्रीएम्प्टिंग देयर मूव्स, और तीसरा उनके पेरेंट्स को बताना, और चौथा जो स्कूल्स में या वहाँ पे जो स्टूडेंट्स के साथ, मेल स्टूडेंट्स के साथ, उनके साथ ट्रेनिंग करना। तो उनको ये बताना कि ये जो आप कर रहे हैं, दिस इज नॉट ओके, एंड दिस इज नॉट अ साइन ऑफ emerging manhood, because they used to see teasing As girl, the masculinity. sign of masculinity, and it was told that a real man is someone who does not do that. A real man is someone who approaches a woman through proper social, societal channels and respects women. So ये जो message है ना, ये उनको देना, because they usually get their messages a lot, and I'm not blaming Bollywood films from that, about how to approach women. And I think Bollywood films played a major role in their perception of women. They do. So Yes. मुझे Bollywood, actually, many films, many songs promote stalking, promote sexual misbehavior. जैसे एक गाना है, वो मुझे याद है कि जब एक स्कूल में गया था, तो उन्होंने कहा था, सर ये गाना हम सुन रहे थे, वो इट इज़ अ सॉन्ग ऑफ धर्मेंद्र एंड हेमा मालिनी, इन विच धर्मेंद्र इज सेइंग टू हेमा मालिनी, तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा मैं सोनिया, छोड़ूंगा सोनिए। हाँ। ताकि मुझे भेज दे चाहे जेल में. And they were all laughing, and I said, do you understand how much traumatic it must be for a woman, for to listen to this song? It is not fun. Don't make it banal. So Bollywood has actually, our society, many things have made the harassment, the trauma of women very banal, and that is something that is ridiculous, and that must be, I mean, strong steps must be taken to show what the reality is. जो reality है उसको दिखाना चाहिए, not कि by making something so horrible a banal and Entertainment. yes. Not package it No, as no, entertainment. yes. Something so. Exactly.
So again, my mind is exploding with questions right now. Okay. आपने इतना सब कुछ बता दिया और इतनी ईज में आप बताते चले गए ये सब. Wow. Clearly, sir, the change came through education. आपने इन चारों चीज़ों पे लोगों को educate किया, बच्चियों को, उनके parents को, वहाँ की Or legal preventive action. establishment को, Also with और preventive action. preventive action. Because the girls, Exactly. because in these there has to be zero tolerance. जैसे Zero tolerance. एक केस मुझे याद है, वो लड़कियां स्कूल से ना वो जा रही थी, तो एक दिन एक हमने उनके स्कूल में एक लेक्चर लिया था. उन्होंने कहा था कि जो बसेस खड़ी होती है ना, उसके ऊपर क्लीनर्स, ट्रेनर्स सारे सोते हैं, और जब भी हम जाते हैं वो खड़े होके ना अपने को एक्सपोज करते हैं, तो हमें बहुत शर्म आती है, हम अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताते. तो आई टोल्ड दिस टू दे टोल्ड मी एंड दे सेड कि सर आप कुछ कर सकते हैं. मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, बट आई एम श्योर पुलिस कैन डू इट. Immediately a step was taken, those guys were rounded up and cases were lodged. They were very happy. In fact, the whole school discussed it in the prayer next day, how a change has taken place. And the girls who had done that, I said they must be encouraged, so they came in front of the school assembly, talked about it, everybody clapped for it, clapped for them, sorry, and we said, this victory goes to you, they will never do it again. So this kind of zero tolerance and immediate impact is very essential कि ताकि हम इस तरह के crimes को बंद कर सकें. Zero tolerance is absolutely the right word, sir. Yeah. I'm going to keep it in my mind. And as a mother and a woman, Sure. that made me emotional really, right? कि मतलब बच्चियाँ स्कूल जा रही हैं और लोग एक्सपोज कर रहे हैं और उसका कुछ हो नहीं रहा, they're just putting up, and that's just, yeah, zero tolerance is absolutely Sure. that cannot be allowed to happen in Sure. any kind of society. Sure. And thank you, sir. Kudos to you and the police force there who took actions regarding this. Sure. There's so much I want to ask. Let's first ask something which struck me. आपने जब बताया वो pedophiles के बारे में, और आपने वहाँ की जो लॉ एनफोर्सर्स थे उनको ट्रेन किया कि कैसे पेडोफाइल्स को आइडेंटिफाई करते हैं. सर आई वांट यू टू गिव अस अ फ्यू, train us as well, whatever little you can tell us, कि कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम, अगर हमारे आसपास ऐसे गलत लोग हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. आई थिंक मतलब मैं कुछ पॉइंट्स होते हैं जो मैं पुलिस के सिवा किसी को बताना ठीक, क्योंकि आपका पब्लिक प्लेटफॉर्म है तो वो चौकन्ने हो जाएंगे. तो लेकिन कुछ पॉइंट्स ये ज़रूरी हैं कि जैसे आप पार्क में जाते हैं, देखते हैं कि एक आदमी जो है रोज आके वहाँ पे पार्क में बैठा हुआ है जब बच्चे खेल रहे हैं, राइट. उसका क्या काम है वहाँ पे, क्या वो किसी बच्चे के साथ जुड़ा हुआ है, राइट. आप स्कूल्स में अगर आप स्कूल्स देखें, हमारे देश में आज भी 90% गर्ल्स जो हैं वो साइकिल से पैदल स्कूल वो चलती हैं. तो दोनों तरफ जो है उस वक्त पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन चिल्ड्रन वो खड़े रहते हैं, राइट. तो खड़े रहने का मतलब ये नहीं है कि वो सैकड़ों की संख्या में खड़े रहते हैं, मर्ज करके क्राउड के साथ खड़े रहते हैं, नोट करते हैं कि कौन सी लड़की जो है वल्नरेबल है. एक केस था जिसमें एक लड़की थी, वो रोती हुई वापस घर जा रही थी, तो एक आदमी ने उसको देखा, बोला कि क्या बात है बेटा, क्यों रो रहे हो. नहीं, मेरे जो है मैं फेल हो गई हूँ 2 सब्जेक्ट्स में. तो उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा वो जो है चेंज कर दूंगा, राइट, तुम मेरे साथ चलो. या ओके. सो उसने बताया था ये केस, और वो उसके साथ गई, लेकिन वो डर के उसके बाद फिर भाग आई क्योंकि उसको लगा कि कुछ गलत है. स्मार्ट गर्ल. या शी इज स्मार्ट. एक केस था जिसमें एक आदमी एक लड़की को घसीट के ले जा रहा था मार्केट के बीच में से, तो और दोनों तरफ लोग चुप थे. क्यों चुप थे? क्योंकि वो पहले उसी रोड से गया था और उसने दोनों तरफ दुकानदारों से कहा था कि भैया ये मेरी लड़की जो है ना गुस्से में घर छोड़ के भाग गई है, तो क्या आपने देखा है उसको? कहते नहीं भैया हमने नहीं देखा. तो जब लोगों ने उसको देखा तो दोनों तरफ दुकानदार बैठे हुए थे, उन्होंने सोचा कि ये फादर है, लड़की को बेटी है, उसकी बेटी है. तो वो लड़की चिल्ला रही थी, कहती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो. लेकिन और दुकानदार उसको कह रहे थे नहीं बेटा ऐसे नहीं करते, अपने पापा के साथ घर चली जाओ.
उसको जस्ट इन द लास्ट मोमेंट समझ में आया कि समवेयर पीपल आर टेकिंग हिम टू बी माय फादर, सो इंस्टेड ऑफ सेइंग मुझे हेल्प करो, मुझे छोड़ दो, शी स्टार्टेड शाउटिंग ये आदमी मेरा पापा नहीं है. ओके, सो इट अलर्टेड वन ऑफ द शॉपकीपर्स. वो दुकानदार वो उठ के आया, उसने कहा क्या बात है बेटा, तूने बोला था कि तू इसका बाप है, तू इसका बाप है या नहीं? इट वाज द सरदार जी. So that man left her and ran away, right? Now they use clever methods like that, in order to be close to young girls, vulnerable girls. और ये जो करते हैं ये अक्सर vulnerability चेक करते हैं बच्चों की. और ऐसे जहाँ भी आपको लगे कि दिस पर्सन डज नॉट फिट इन, वो इनऑर्डिनेटली ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है बच्चों के साथ बहुत घुल मिल जाता है, ऐसे लोगों पे जो है ना सतर्क रहना चाहिए. सतर्क रहने की ज़रूरत हाँ. है. जी, बिल्कुल सर. सर, आपने जो 2 स्टोरीज़ बताई, जो 2 एग्ज़ाम्पल्स आपने बताए, उसमें एक चीज़ जो बहुत क्लियर हो गई कि दीज़ वर बोथ चिल्ड्रन हू डिड नॉट फील सिक्योर एट होम. Sure. राइट? द फर्स्ट वन और एटलीस्ट सेकंड वन वाज परसीव्ड टू बी. पहले केस में उसे डर लग रहा था, घर पे क्या बताऊंगी, कैसे बताऊंगी. शी बिकेम एन इजी मार्क फॉर समबडी टू टेक एडवांटेज ऑफ. और दूसरे केस में लोगों को लगा कि उसका फादर है तो कुछ भी कर ले उसके साथ. Sure. राइट? तो it's important for children to feel secure in their home and for society to understand that children should be secure and treated a certain way at Sure, home, yeah. ताकि ऐसी चीजें ना हो. Sure. तो उन बच्चों को ये भी सिखाना चाहिए कि इट इज ओके टू शाउट. हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा रिस्पेक्टफुल, पोलाइट. रेस्पेक्ट करो, पोलाइट रहो. तो ये सब. अब आप बताइए कि जहाँ पे 90% गर्ल्स जो है, यू डोंट टीच देम टू स्क्रीम एंड शाउट. अगर उसको स्क्रीम और शाउट करने की जरूरत पड़ी तो वो कैसे करेगी? Right? So you must train them that it's okay to scream and shout. Respect behavior, not age. Behavior की respect करो, age की नहीं. अगर तुमको लगता है कि किसी का behavior ठीक नहीं है, उसको respect करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे उसकी कितनी भी age हो. तो ये सब हम उनको सिखाते थे. तो ये जो है ये conventional education के against जाता है. और कई बार इस तरह का एजुकेशन देने से जो है लोग मतलब थोड़ा सा नाराज होते होंगे, डिफेंसिव हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं. हमें याद है कि जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था तो पहले स्कूल की प्रिंसिपल हमारे पास आई थी, बोला था कि आप मेरे स्कूल से क्यों शुरू कर रहे हैं, मेरे स्कूल की तो बदनामी हो जाएगी, आप ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं. तो हमने कहा कि हम कहते प्लीज आप, मैंने इस स्कूल को इतना बड़ा किया है और अगर आप यहीं से शुरू करते हैं, कल मेरे पास सारे पेरेंट्स के फोन आ जाएंगे, ये आ जाएंगे कि आपने इस स्कूल से क्यों शुरू किया. तो ये जो एक धारणा है कि हमारे से मत शुरू कीजिए, राइट. तो ये सुधार, ये अच्छी चीज, ये आप हमारे से शुरू मत कीजिए. भले हमारे स्कूल में बच्चे हों जिनके साथ गलत हो रहा हो, वो चलेगा, बट ये अच्छी चीज आप हमारे स्कूल से शुरू. ये जो फियर है ना कि बदनाम हो जाएंगे या वो हो जाएंगे, और वी एसोसिएट गर्ल्स ऑनर और कॉन्सेप्ट्स लाइक दैट with our societal honor and all that should go, because this often gives rise to a lot of myths. जैसे मुझे किसी ने while dealing with so many girls, they said कि a reason why their trauma came was that they said कि नारी का शरीर जो है वो तो मंदिर होता है ना सर, अब वो मंदिर अगर डेसिक्रेट हो गया तो you have to tell them that तुम्हारा शरीर मंदिर नहीं है, तुम्हारा एसेंस जो है वो मंदिर है. तो उसको कोई जो है रेपिस्ट, सेक्सुअल असॉल्ट नहीं कर सकता. सो डोंट, आई मीन सो एंड देन दे वुड फील बेटर अबाउट दैट. आई सेड तुम्हारा जो अस्तित्व है, तुम्हारा जो एग्जिस्टेंस है, तुम्हारा जो एसेंस है, वो टेम्पल है बेटा. वो ये जो है ये बॉडी तुम्हारा जो है टेम्पल नहीं है. ऐसे मत करो. अगर किसी ने बॉडी को तुम्हारा डेसिक्रेट किया है या तुम्हारे बॉडी को वो किया है, यू आर मच बियॉन्ड योर बॉडी. सो ये जो है इसको डीलिंग करना, ये भी थेरेपी में ये भी बहुत हेल्प करता है. और ये पेरेंट्स अगर करें तो बच्चे जो है बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, अदरवाइज दे बिकम वेरी डिफेंसिव अबाउट देयर बॉडीज. दैट इज सो ट्रू सर. वाओ सर, at this point I'm a little speechless. There's just so much to wow. So
All I can say is I really hope कि जो काम आपने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में किया था, हाँ जी, we can do more of that work, much more of that work throughout schools across India. Like it should be mandatory. It should be sure, a part of when a school is set up. जब स्कूल सेटअप होता है तो उसमें ये कोर्स होना चाहिए जहाँ बच्चों को स्टैंडिंग अप फॉर देमसेल्व्स, जेंडर सेंसिटिविटी, ये सारी चीज़ें उनको sure, सिखाई जाएँ और उनके पेरेंट्स को भी मे बी वंस अ वीक और व्हाटएवर हाउएवर इट वर्क्स सिखाया जाए बिकॉज़ इट्स yeah. Teacher सो selection, इम्पोर्टेंट, teacher राइट? selection, teacher टीचर selection, सिलेक्शन। very much. For example, even the tutor who comes to teach your parents. एक मुझे याद है एक सिख फैमिली थी, वो अपने बच्चे को वो जो है भजन सिखाने के लिए उन्होंने ग्रंथी को अपॉइंट किया था। तो जी। बच्चे ने बताया कि जो है ग्रंथी जो है वो मुझे कई बार ऐसे छूता है जो वो मुझे ठीक नहीं लगता। तो पेरेंट्स दोनों जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे बाय द वे। तो उन्होंने कहा बेटा जी। तुम्हें ऐसे उनके बारे में ऐसे नहीं सोचना चाहिए, तुम गलत हो, तुम्हारी सोच गलत है। द फैक्ट इज दैट तो इट लेड छोटे बच्चे की सोच गलत है। हाँ, तो उसने कहा कि जब वो बोलते हैं बेटा नहीं ऐसे ऐसे करो ऐसे, तो उसमें उन्होंने उसको बताया गलत है एंड इट एंडेड अप इन सेक्सुअल असॉल्ट वन डे। वो दोनों रो रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने जो है अगर उस वक्त हमको पता था कि ये शैतान है तो हम उसकी जो मतलब उसका जो हाल करते। मैंने कहा आपकी बेटी ने बताया था वो शैतान है, बताया। आपने ध्यान नहीं दिया, आपने किस पे विश्वास किया, अपने मिथ के ऊपर, अपने उसको चेंज नहीं करने दिया। तो वी मस्ट ट्रस्ट आवर चिल्ड्रन यू नो एंड व्हेन दे टॉक अबाउट समथिंग अनकंफर्टेबल गिव यू नो इम्पोर्टेंस टू इट, उसको हटाइए मत। तो ये बहुत ज़रूरी है जी। अगर हम अपने बच्चों को बचाना चाहें फॉर द सेफ्टी ऑफ आवर चिल्ड्रन। Yes. Absolutely, sir. And empowered children Sure. will then become empowered women, empowered men. Empowered parents. Yes, empowered parents, Sure. right? Who hopefully will then have the courage to stand up for themselves and for others. Sure. अगर वो कभी ऐसी situations में Sure. फंस जाए Sure. Very गलती true. से। जी। So we were talking about we're talking about these criminals who do these kind of heinous acts, who do Heinous these crime. kind of violent acts, right? And आपने बताया कि it's not something that's intrinsically wrong with the society. ये Sure. कुछ लोग होते हैं जो ऐसे होते हैं। Yeah. तो ये कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं सर? मतलब क्या ये उनके नेचर में कोई प्रॉब्लम है? Is there something different about their brain? या उनकी अपब्रिंगिंग, उनका परवरिश, उनका वातावरण ऐसा रहा है? मतलब इज इट नेचर, इज इट नर्चर, इज इट बोथ? क्या व्हाट It's इज हैपनिंग हियर? it's very difficult to say because अभी तक कोई conclusive research नहीं हुआ है कि ये what is the causative factor, right? Biology is important because many of the बहुत लोग ऐसे हैं जो बच्चों को exploit करते हैं, बच्चों के साथ sexual crimes करते हैं। उनके बारे में ये देखा गया है कि that they are not attracted by secondary sexual characteristics या grown up women, they are attracted by children, they are वो बच्चों का innocence उनको attract करती है, right? Okay, so उनका ये भी देखा गया है कि उनकी एक मतलब बहुत उनकी एक ऐसी धारणा होती है कि जो सेक्स है वो नॉर्मल है और सोसाइटी बच्चों को जो है वो इससे वंचित कर रही है। इनफैक्ट अमेरिका का एक बहुत फेमस वेबसाइट, अमेरिका का कहना गलत होगा, वो बेस था अमेरिका में, ये बैंड है। तो ये उनका मोटो है सेक्स बिफोर 8 और इट इज़ टू लेट, यू नो। सो उन मतलब उनकी ये एक तो उनकी धारणा भी है कि बच्चा जो है वो सेक्स के लिए रेडी होता है, एडल्ट्स जो है उसको प्रिवेंट करते हैं, और पेडोफाइल्स जो होते हैं जो बच्चों को ऐसे करते हैं वो कहते हैं कि तुम सेक्स के लिए रेडी हो, तुम सेक्स के लिए ओके हो, राइट? सो ये एक बहुत ही भ्रांत जो है गलत धारणा है जो रन करती है। सो दिस इज एनवायरनमेंट, राइट? Then there is also environment. there is also biology कि that these people are not attracted। ये secondary sexual characteristics जो हम कहते हैं जो grown ups में होती हैं, women में, you know, sexual organs and I mean or उससे they don't get attracted. they don't get attracted. Several studies have you know shown that, and it is by and large a gene environment interaction that takes place,
at certain times, which produces this condition. But what is very important is that legally and in every way, that does not absolve them of the crime. सो अगर आप करते हो उसका मतलब ये नहीं कि मेरी बायोलॉजी खराब है और मैंने कर ली. आपकी बायोलॉजी कुछ हाँ भी हो, विल जो है वो आपका है, एंड योर विल इज नॉट राइट सब्जेक्ट टू बायोलॉजी. योर विल मे बी कंडीशन बाय बायोलॉजी, बट द फाइनल अर्बाइटर इज यू. तो ये केस जो है ये सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं, जहाँ पे ये डिक्लेयर हुआ है कि यू आर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर क्राइम. सो डोंट गिव द एग्जाम, सो डोंट गिव द एक्सक्यूज कि ये बायोलॉजी थी, मैं ऑफ रोक नहीं पाया. बायोलॉजी जी तो नेचर हो या नर्चर हो जो कुछ भी हो विल पावर इज सब्जेक्ट टू योरसेल्फ या कल्पेबिलिटी आपकी है, कल्पेबिलिटी को आप कैपेबिलिटी चेंज. आपकी हाँ. है तो जी 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 दैट्स सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू से कि बिकॉज कितनी बार हमारे देश में वी वर टॉकिंग अबाउट पेडोफाइल्स एंड श्योर thought makes me sick, but even when we are talking about like adult women who श्योर get raped, या there is so much victim shaming ना. श्योर इतनी विक्टिम शेमिंग विक्टिम को इतना झेलना पड़ जाता है इसीलिए वो नहीं जाता पुलिस के पास भी नहीं श्योर जाता कितनी बार श्योर राइट इंस्टेड ऑफ शेमिंग द perpetrator, the abuser, जिसने एक्चुअली जिसकी जिसकी गलती गलती है. थी हाँ श्योर जिसने जिसका विल whatever the reason whatever the impulses they श्योर were not able to control it या and so they are at fault and they need to be उनकी accountability होनी चाहिए श्योर. right They could control it, and they have the power to control it. And this has been even asserted by the Supreme Court of America, the Supreme Court of India, the Supreme Court of many countries, that by saying that I don't have a power or control or the will was not my own, that is not acceptable reason acceptable in any rule of law society. किसी भी rule of law society में ये acceptable नहीं है. बिकॉज ये भी काफ़ी सुनने में आता है अनफॉर्चुनेटली कि जब इतना वायलेंट क्राइम होता है तो पीपल वर इन सच दे वर इन डिफरेंट मेंटल स्टेट ऑल टुगेदर दे हैड दीज urges they were not in control of themselves but all those cannot be an excuse for this It is, I mean, what do you mean by a different mental state? I mean, it's the same person, right? it's Okay. the same person So it's the same person, it's the same thought process, it's the same. You are in an extreme emotional state, yes, but the choice to say no is not something that has been taken away from you. So these जी people, जी for example, in that extreme emotional state, suppose a policeman comes in front, won't they stop and run away? I mean, tell me. I mean, there have been cases where, I mean, I know this case in which this woman, she, was accosted by three men and they tried to sexually assault her. It was a dark alley. And there were two policemen who had a suspicion who went in and shone the torch. And the man was, they were almost on the verge of penetrating her and assaulting her. And when he shone the torch, they immediately got up and in that position they ran away. So couldn't they say, I mean, did they have to really finish what they were doing? No, they had to run away. So it is. they could run away So yes yes, they can. I mean, it's a myth that is perpetrated, and of the helpless man who cannot stop himself. And unfortunately, even some statements by politicians, others, which is very irresponsible, like yes "ladkon se galti ho jati hai," and men cannot stop themselves. They need to be actually banned, and they need to be told. I've done that again and again in many forums, saying that these kind of statements are illogical, unscientific, and they should be told because they encourage others to go ahead and be more impulsive towards women. be more irresponsible Sure. Yeah. वाओ थैंक यू सर ये बोलने के लिए जो आपने स्पेसिफिकली जो आपने बोला ना कि because it's right politicians make a lot of irresponsible comments right and then their blind followers will use those same excuses to do completely unpardonable actions Sure. Very Right. true. Yes. Yeah. wow okay yeah no that सर तो हम बात कर रहे थे हम यहाँ मेंटल हेल्थ पे हम आते हैं Sure. वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट हाउ
it is completely possible to stop yourself. Up, you put it Sure. absolutely the right way कि अगर पुलिस वाला आएगा तो तुम उसको देख के भागोगे, Sure. right? So it is in your control to stop yourself. तो how much, ये बात हो गई विल पावर की, ये बात हो गई आपकी इंटेंशन की एंड योर एबिलिटी Sure. टू स्टॉप योरसेल्फ. बट हाउ मच does mental health affect crimes, and especially violent crimes like gruesome rapes and murders? How much does a person's mental health come into picture? See, if you see some of the worst disorders, like, say, for example, schizophrenia or psychotic disorders or bipolar, they are not known to commit sexual assaults. There is no correlation between them. So it is not that extremely disturbed mental states lead to sexual assaults or violent crimes. Less than point, I think, 5%, 0.05% of people with schizophrenia do commit crimes under command hallucinations. When hearing voices saying, "Go and commit a crime," and go ahead and commit a rape or sexual assault or anything like that. It is not that. It's very rare, right? And it is important also to know that they were acutely psychotic or schizophrenic at the time of committing that. It is rare. So people who commit sexual crimes, sexual assaults, they are not really mentally ill in that sense. They're very normal in the sense that if you see their daily structure, they're maintaining a normal schedule like you and me from morning till evening, right? Maybe it is far less productive, but they are maintaining a schedule. They are managing their lives. They are doing many things at the same time. So as far as their capacity, their capability of the brain is concerned, the ability to think intellectually, their affect, all that is very much under control. I mean, the only thing is that when they give a reason that I was mentally ill or not, I mean, that sometimes, quite often actually, that falls apart. When I have seen cases in which I had to testify about a mental health or illness of a person who was who committed a crime and said it is because of mental illness. When you do an analysis of the time when he committed the crime and how he has maintained himself since then, you don't see the correlation. So therefore, it's not really a thing. It has been projected that way. Ki people who are mentally Yes, ill are yes. responsible for heinous crimes. Unse, bachna हाँ, chahiye. हाँ. Schizophrenics are violent, or psychotic disorders are violent people. Movies are, the stuff of movies is made of that. Like in real life, I think we need to be more realistic. Wow. So less than 0.05% तो is negligible then, Yeah, right? Because yeah, as it is, the number of people who have such acute mental conditions, एक तो वही सोसाइटी में comparatively मतलब sure, कम है, और yeah. फिर उसका भी 0.05%, right? तो मतलब हम कह रहे हैं कि such criminals might use their mental health as an excuse, but it's largely nonsense. Absolutely, it's largely nonsense. Yeah, Wow. So again something to think about कि sure. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लोग हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं वो हमारे और आपके जैसे नॉर्मल लोग हैं, Yeah, I mean, राइट? लार्जली sure, नॉर्मल, largely normal, राइट? but they also have an abnormality in the sense that they don't see a value in intimacy or marriage. Very often they are राइट, loners. Very often they राइट. don't believe in the values that you and I believe in. जैसे हाँ. मैं सेक्सुअल ऑफेंडर्स के साथ एक ग्रुप होल्ड करता था तिहाड़ जेल में, तो मुझे याद है कि वो इंटीमेसी या मैरिज या जिसे कहते हैं, एक दिन बात आई थी उसके बारे में कि wooing, how you go across, give flowers to a woman, become intimate, and then it leads to sexuality. So they said, nahi sir, ye sab bakwas hai. They see sex as something deeply reductionistic, you know. They don't see all these processes which lead from, emotional intimacy onto physical intimacy as something worthless. That is something that is definitely true with a large percentage of these people. Wow. Wow.
Okay, that is, and that is a high correlation, Yes, right? कि that people is who have this kind of a thinking, you would जहाँ उनको uh, जहाँ they think the softer side of true. relationships are completely useless. Yeah. किसी काम के नहीं है वो सब. तो So relationships are too complex for them. They find relationships very complex and difficult. So they bypass that in order to have sexual intercourse with a woman. They feel that relationship you don't need to go through that process. wow. Sir, ऐसी कोई like is there some correlation between like when these kind of criminals Yeah. do they also have any kind of common environmental factors upbringing जिसकी वजह से उनकी ऐसी सोच है ऐसी thought process है is that also a thing or it can be completely different environments and yet these people have this kind of thought process. आई वोंट से कि अगर आपने घर में बच्चों को जो है अपने ठीक तरह से मोरल डेवलपमेंट किया है उनका दे विल डेवलप लाइक दैट डेफिनेटली नॉट राइट बट ऐसे दे आर मल्टीफैक्टोरियल दे आर नॉट सिंगल फैक्टर but moral education at home, respecting relationships, respecting, say for example, say a father who does not respect his wife in front of his children, the children by and large will find it very difficult to respect a woman in later life. I mean, that is by and large a strong correlation between that, until and unless some other factors has overturned that. So moral education is very important apart from genetics and biology. And when we say moral education हम सिर्फ ये नहीं कह रहे सिखाने की बात नहीं कह रहे हम करके दिखाने की बात कर रहे Sure, it is हैं right experiential. हाँ You have because to children experience it. It is not something that you say yes that okay, be like this, respect women. No, right it's right rubbish. It doesn't make sense. right so that makes a lot of sense okay Yeah. so ये अभी मैंने कुछ दिन पहले ही कहीं सुना था when I was just doing my research on on violent crimes and causes and the kind of mental makeup behind people who do these things right तो उसमें इनफैक्ट किसी और पॉडकास्ट पे ही मैंने सुना था there was an expert जिनका नाम मुझे याद नहीं है who was saying something to the point कि एक बार एक मर्डरर भी रिफॉर्म हो सकता है बट एक रेपिस्ट एक रिफॉर्म नहीं हो सकता because there can be a thing like murdering someone in throes of passion and anger and all that but rape is premeditated. I would agree partly with that. I think most often it is premeditated and it is also organized. Rape is not a disorganized crime. Most rapes are organized crimes. But I'm slightly uncomfortable with the word reformation because to me that's a very much a spiritual word, a trans. And Acha. there is, in psychology, in psychiatric research, it's very difficult to measure, reformation. Like, is there an evidence-based study, or is there something? Yes, there have been men who have committed only one sexual assault in their life and have not done so again. Right? Would you call them reformed? Right? I mean, there may be various factors. You may have controlled, their access. You may have stopped them. There may be other, factors, but there might be fear of law. There might be fear of law, but I don't, when somebody talks about reforming criminals, I find it very difficult. That's a spiritual concept, with Gautam Buddha could do, or say a great prophet can do. But ordinary mortals like us, we can only develop controls and steps by which, we can stop people. We don't have that kind of power to reform people. That's what I feel. Wow. That's quite a statement, sir. क्योंकि बहुत I mean at least West में तो India से ज़्यादा common है rehabilitation of prisoners, Sure. right? And of course, prisoners maybe there are people who are in there for petty crimes, and those are just victims of circumstances. But when we talk about hardened criminals who've committed murders, who've committed rapes, और उनकी भी rehabilitation की बात हो रही है, and here we are saying कि we should be wary of the fact that we can reform them क्योंकि ये तो spiritual concept है. We can control so then them. We can control them. But we can control them. We can control them. We can develop more and more controlling mechanisms.
But to say that I can reform, there needs to be evidence-based study to say that I can use this method or technique in order to reform somebody, right? I'm very And there is, no, please go ahead, please go ahead. I'm very apprehensive of that concept of reformation, right? Wow, Yeah, sir. yeah. Because I wanted to ask you कि इंडिया में क्या हो रहा है around reforming prisoners, what can be done around that. तो अगर हम उनको reform नहीं कर सकते तो हमारे पास like you said कि control is what we should aim for, right? Societal control. जैसे if for Societal example control. sexual assault, या उसमें many places they have a database, an entry. Okay, you live in this area, you have to report, Regularly your check in with the police. your neighbors should know about it, right? Okay, so you should not be going near a park or a say school or places like that. So you control the Wow. person, control the movement. That has been seen to Got be the it. best predictor. But no therapy, no psychotherapy, no medical treatment or medicine as such, has been developed as such, which can effectively say that I can, reform people. I'm To a sorry. degree of certainty. Yes, I think. And unless there is that certainty, you can't take the risk of having these people कि हाँ ठीक है हमने कर दिया अपना काम अब जाओ वापस सोसाइटी में. We can't do that. You can be realistic. You can create जी. enough pragmatic ways of dealing with the problem. But a हाँ. total overhaul, I think one should be restricted in using such words. Yeah. Wow, sir. सर एक बात बताइए, does this happen in India? क्या I know कि states में ऐसा होता है, US में ऐसा होता है, जहाँ पुलिस at least काफी जगहों पे होता है, where they have a database of the criminals in the area and those criminals are required to check in. Yeah. From what I अभी understand. भारत क्या में हमारे यहाँ नहीं, कहीं अभी होता भारत है? में ये शुरू नहीं हुआ बिल्कुल है. ही नहीं होता है. अरे बाप रे. एक दो जगह पे आंध्र प्रदेश में मुझे मालूम है उन्होंने शुरू किया था, लेकिन जी. इसके लिए जो एक पॉलिटिकल विल चाहिए, जो एक सोशल विल चाहिए, वो उसका भी Wow. नेशनल कंसेंसस नहीं बना है, राइट? बिकॉज How? इस चीज पे कैसे नहीं बन सकता नेशनल कंसेंसस? आई एक थिंक तो बहुत जरूर मतलब I can't think of why anybody will not agree to it. हाँ भैया क्रिमिनल है, हर किसी को पता होना चाहिए कि ये यहाँ पे रहता है, we should be careful. एंड बिकॉज ये ह्यूमन राइट्स का इशू बना के जो है वो ले आते हैं कि उसका ह्यूमन राइट्स वायलेट होता है वगैरह वगैरह, तो जो है इसीलिए शायद ये इशू अभी तक नहीं बना है. तो वो बोलेंगे कि ठीक है, फिर आप सेक्सुअल असॉल्ट के लिए करना चाहते हैं या जैसे बाकी क्राइम्स है उसके लिए भी फिर होना चाहिए. बहुत मुश्किल है, लेकिन सिर्फ सेक्सुअल असॉल्ट के लिए या जो खासतौर से बच्चों के लिए जो है इस तरह से क्राइम्स कर रहे हैं, उनका डाटाबेस करके ये मैं तो इसका सपोर्ट करता हूँ. जी बिल्कुल. I mean at least hardcore criminals, hardened criminals, repeat offenders and pedophiles, I mean please correct me, are often repeat offenders. So there, Right? recidivism is high because जी sir? recidivism जिसको हम कहते हैं ना, repeating a crime again, recidivism अच्छा. is very high in this group because they दो चीजों Get के away with it. हाँ, they get away with it. दूसरा ये भी है कि this is also the high point of their life. The sexual assault of a child or other crimes, this is the high point of their lives. जैसे आपका और मेरा high point of the life क्या है? That we had children. When we looked at the kid's face, we were extremely high. Or say, suppose we get something like very good marks in exam or our relationship. These are high points of our life. These people, इनका जो है high point सिर्फ एक ही होता है, the assault, और कोई नहीं होता है. तो ये serial offenders. Exact, serial offenders. इसलिए जो है ये recidivism इस ग्रुप में बहुत होता है because their brain knows only one way of feeling good about itself. जैसे drug addicts होते हैं ना, substance users, they feel high only while taking the drug. इसलिए उनको बार बार लेना पड़ता है because और किसी चीज से उनको high नहीं मिलती. The brain has been hijacked. So for many of them also, they feel that they cannot feel high in any other way. और जो इनकी थेरेपी होती है वो भी बाय एंड लार्ज इनको मतलब डील करती है कन्विंस कराने में कि देयर आर अदर वेज ऑफ द ब्रेन फीलिंग गुड, फील हाई अबाउट योरसेल्फ. अगर आप वो उसमें सक्सीड हो पाए, देन द
जो आप पहले आपका पिछला क्वेश्चन था कि रिफॉर्म, हाँ तो हाँ वो हम कह सकते हैं कि हाँ ये जो है रिफॉर्म हो रहा है या हो गया है। सो वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट देयर, बट अभी तक कोई सक्सेसफुली नहीं, इनको दूसरी पूरे चीजों पे मूव नहीं करा पाया है, दे गेट देयर हाई वेरी फ्रॉम समथिंग एल्स, वेरी ऐसा नहीं हो डिफिकल्ट, पाया है। वेरी डिफिकल्ट। वाओ वाओ ओके नो हाँ जैसे हाँ हाँ जैसे दैट substance शुड abusers have to stay away from drugs for the rest यस of their यस life, यस similarly हाँ these people have to stay away from what they consider their praise, their targets and certain situations all their life. got it तो सर फिर लेट्स गो बैक टू कंट्रोल, यू मेंशन कंट्रोल राइट एंड वी Yeah, टॉक्ड अबाउट कि एक तरीका है कि इनका डेटाबेस होना चाहिए, दे शुड बी रेगुलरली आस्क्ड टू चेक इन with with the law enforcement and people and around also them should and know also psychologists and therapists. therapy should also साइकोलॉजी एंड got थेरेपिस्ट, psychology हमारी गवर्नमेंट जो है अगर hmm साइकोलॉजिस्ट को पर्टिकुलरली फॉरेंसिक साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी को मैंडेटरी कर देना पूरे में, that you have to report to them because these people just not need the hardened questioning of the police, they also sometimes need therapy to stay away. Maybe the therapy can help them stay away for 3 months, then again 3 months. So that's why there is such a high need for clinical and forensic psychologists in the country. got it because ये तो कोई नहीं कर सकता, नहीं, आई मीन एटलीस्ट अभी तक तो नहीं हुआ है कि उनको लाइफ लॉन्ग के लिए रिफॉर्म कर दे. यू विल नीड कंटिन्यूस इंटरवेंशन फॉर विच यू नीड yeah, clinical psychologists, forensic psychologists working with law enforcement sure, yeah, to reform these, to control control such this, hardened criminals. sure. Wow. Okay. But they should definitely not just be कि हाँ उनका the time period they served अब उनका हो गया, नहीं, sentence खत्म हो गया, now they are out in the society unmonitored. नहीं, they are actually more hardened than before as a result of that. What? They're more hardened than before because prisons में बैठ के वो सारा टाइम क्या कर रहे हैं? Prisons में जब वो बैठे हैं, they are replaying the crime in their head throughout every day. So they must have repeated that crime, visualized that crime. Say 2 साल की जब सजा हुई है, every day 2 years they have visualized it and imagined that and perfected it. So there has उनने been तरीका ढूंढ लिया कि अगली बार कैसे फंसेंगे नहीं. exactly. That is a horrific scenario, sir. It is. Wow. Sir, और ये is this most of the hardened criminals जिनके साथ ऐसा होता है जो हम बात करें, will most of the murderers and rapists, the gruesome crime criminals in the in prisons, would most of Many them of follow them. under this category या Many of exceptions भी होते no हैं? no many of them. Many of them. For even for Wow. homicide, people who committed homicide, Homicides, yes. sexual assaults, terrorism, they fantasize about the crime inside their heads again and again, and it gives them a high. My God. तो प्रिजन में बैठ के, बिकॉज प्रिजन में उनके पास नेचुरली वो और कहाँ जाएंगे टू गेट देयर हाई, Sure. वो अपने क्राइम को ही रिप्ले कर करके उसी से उनको उनकी खुशी मिल रही है, Yeah, that's right. उसी से उनको डोपामिन मिल रहा है. Exactly. So yeah, you're going to you're going to get me speechless quite often in this podcast. Okay. Wow, that is a horrific scenario. The And topic is like that. Yeah. yes, absolutely. And you're right, sir. अगर ऐसी चीज हुई, and I'm so glad कि आज हम ये podcast कर रहे हैं, because मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये चीजें नहीं मालूम है. Right. they don't know कि ऐसा हो सकता है. हम इस तरीके से कि majority of hardcore criminals cannot be reformed, they need to be controlled. No, yeah. उनके कंट्रोल के लिए ऐसे स्टेप्स लिए जाने चाहिए, उन स्टेप्स के लिए एक नेशनल कंसेंसस बनाना पड़ेगा जो नहीं बन रहा है. ये सब तो Sure. मालूम ही नहीं है हमें से किसी को. Sure. हम बस सोच रहे हैं कि क्यों नहीं हो रही है चीजें, क्यों नहीं हो रही है चीजें इस देश में, इस वजह से चीजें नहीं हो रही है. साइंटिफिकली देखना चाहिए ना, लॉजिकली सुनना चाहिए. मुझे याद है एक बार तिहाड़ प्रेजेंस में
ये जी। वो फंक्शन था, तो वो कॉन्वेंट स्कूल से जो है बच्चे आए थे, लड़कियां गाना गाने के लिए, जी। तो प्रिजनर्स बैठे हुए, मतलब सारे 500 के करीब बैठे हुए थे, फंक्शन था। तो जो जिस ग्रुप के साथ मैंने काम किया था, सेक्सुअल ऑफेंडर्स के साथ, वो भी बैठा हुआ था। तो उसके बाद एक को बोला कि आपको कैसा लगा गाना सुन के, तो उन्होंने कहा कि हमारा दिल पसीज गया, हमारे पता चला हमें क्या है। तो मेरे सामने बैठे हुए थे, मैंने कहा ही इज लाइंग, ही इज नॉट टेलिंग द ट्रूथ, because I was sitting there, I saw their eyes, the eyes of the sexual offenders gleaming by seeing so many children, singing Oh my carols and other God. things. I said, please understand, उस वक्त प्रथा थी कि जो है स्कूल के बच्चे आके गाना गाएंगे, ये करेंगे, उससे दिल पसीज जाएगा। रिजल्ट क्या हुआ? उसका उल्टा हुआ। मतलब, seeing those girls, They would fantasize more. they fantasized more and they felt very high, and I could see the excitement in their lives and all that, because I'm a clinical psychologist. This is what I noticed. They were more going by what the words they was expressing. So I think, I mean, and I'm not canvassing for my profession, but what I'm saying is that clinical psychology has a lot to contribute towards our understanding of this, and change. And it has, yeah, मतलब जैसे बाकी देशों में हुआ है, there has been a rise in clinical psychologists, and as a result, crime has been controlled, crime has been dealt with. हमें अपने देश में भी ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए सर। बिल्कुल करना चाहिए, एब्सोल्युटली। एंड whose idea was it to get little kids into Tihar jail in front of sexual offend? They मतलब have ये been, कहाँ से आते हैं? They also need to work with psychologists. sure, Clearly. ये आइडियलिस्टिक नोशन है। स्कूली बच्चे आएंगे, गाना गाएंगे, तो उनका जो है उनके मन में परिवर्तन आएगा, रिफॉर्मेशन आएगा उनमें देख के। तो मतलब ये जो धारणाएं है ना, ये सोसाइटल बिलीफ्स हैं। तो ये जो है I हमें think they come from a place of kindness, but they're completely misplaced. totally, yeah. Wow, wow. सर वी वर टॉकिंग अबाउट कि कैसे हमें ये जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं इनको कंट्रोल करके रखने की ज़रूरत है। रिफॉर्म थोड़ा दूर की बात है, वो गौतम बुद्ध कर सकते हैं, वो हम नहीं कर सकते, राइट? हाँ, अंगुली माल तो उन्होंने रिफॉर्म किया था, जो जी, हाँ, जी, जी। जी, जी, हाँ, दो स्टोरीज़ वीव हर्ड, sorry, करेक्ट। एंड आई थिंक उसी से इंस्पायर होके हमारे सोसाइटी में या बहुत सारे काइंड हार्टेड पीपल मिस्टेकनली बिलीव कि हार्डकोर क्रिमिनल्स कैन आल्सो बी रिफॉर्म्ड, बट वी आर नॉट बुद्ध एंड दैट कैन नॉट हैपन, या राइट? तो जैसे मैं हमारा आपको जो छोटा सा, लीगल सॉरी, जी, प्लीज़ गो अहेड सर, प्लीज़ गो नहीं, अहेड। मेरे दिमाग में एक बात आई थी जो मैं वो कहना चाहता था। जैसे जी। अ, ये जो मेडिटेशन प्रोग्राम्स होते हैं ना जेल में, प्रिजन्स में, जैसे विपासना वगैरह, हुँ। राइट, ये जी, हमारा जी, जी। धारणा है कि बाय मेकिंग देम टर्न इनवर्ड्स वी कैन मेक देम बेटर, राइट? बट इट डजंट जी। हैपन फॉर मोस्ट पीपल। Going inwards can be a very disorienting and depressing experience for them, because एक मुझे याद है विपासना हुँ, एक्सपीरियंस के बाद जो है मैंने उनको किया था, तो they were very disturbed and they actually became more violent and disturbed after the process. तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मेडिटेशन प्रोग्राम्स या स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स के मैं अगेंस्ट हूँ, बट दे मस्ट बी कंबाइंड विद जी। साइकोलॉजिकल प्रोग्राम्स. So don't make you should be ready for turning inwards, and which most people are not. So when you make them turn आर inwards, नॉट a lot of inner material comes out, फोर्सफुली। and you need a psychologist or वाह! psychiatrist to talk to and get over that. So ये बहुत important है कि that transition to make for our society, to go from the spiritual religious outlook to reforming them, to having a evidence based therapeutic treatment program. वेरी Sorry, मैंने ट्रू आपको सर। interrupt किया, I'm आप कह sorry. रहे थे So, नहीं, नहीं सर व्हाटएवर यू सेड दैट okay. वाज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। बट ये आप ब्रेक में मुझे बता रहे थे कि कैसे हमारा जो पूरा लीगल वे है ऑफ डीलिंग विद दीज़ क्रिमिनल्स इज़ वेरी रिएक्टिव एंड इट नीड्स टू मूव टू प्रिवेंटिव, राइट?
तो लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दैट। लेट्स टॉक अबाउट हमें preempting. क्या रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, लीगल रिफॉर्म्स, प्रिजन रिफॉर्म्स एंड द वे वी डील विद दीज पीपल, right? These Yeah, criminals, clearly spiritual ways are not going to work for more than maybe a small subsection of people who very are ready very for small it, person. right? Sure. Very small percent. Uh, yeah, I think अगर अगर हम ये देखें कि दुनिया के बाकी देशों में जो है हमने कैसे Yes. जो है एडवांसमेंट किया है, मतलब वी आर नॉट द फर्स्ट नेशन इन द वर्ल्ड टू डू सो एंड वी विल नॉट बी डूइंग सो। जैसे इजराइल है या यूएसए है, हमें उनके एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए। एक तो ये है कि जैसे लीगल रिफॉर्म्स क्या लाने चाहिए। आपने देखा होगा कि जैसे निर्भया केस था, उसमें हजारों लाखों की तादाद में लोग बाहर निकले थे, बोल रहे थे कि ये जो है इनको फांसी दो, इनको फांसी दो। अभी अभी जो कैलकाटा में केस हुआ है, उसमें भी द चीफ मिनिस्टर्स एंड अदर्स सेड कि यू नो दे विल बी हैंग्ड और समथिंग लाइक दैट, दे विल बी गिवन द स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ पनिशमेंट। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज दैट हमारे देश में जो है ये समझने की बहुत जरूरी है कि इट इज नॉट द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट विच इज लैकिंग, बट द सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट। जहाँ पे 9 में से 10 लोग छूट जाते हैं, वहां पे एक आदमी का क्वांटम ऑफ पनिशमेंट बढ़ा के आप जो है सोसाइटी में ये मैसेज नहीं दे सकते कि द सोसाइटी इज सेफ, राइट? हमारा जो कन्विक्शन रेट है हमारे देश में वो बहुत पुअर है। अगर आप देखें जो हीनियस क्राइम्स का है वो 20-23% कुछ ऐसा ही है। अभी मुझे एग्जैक्ट फिगर इन दोनों के बीच में जो है वो चलता रहता है। कुछ है जबकि अगर आप बाकी देशों में देखें, इट इज अबव 90%, राइट? सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट, या 90% मतलब and इफ यू सी, 20%. यस यस यस, द गैप इज ह्यूज। हमारे देश में सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट बहुत कम है। अगर आप सिंगापुर को लें, मान लीजिए एक छोटा सा देश है, द सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट इज अबव 90%। The certainty of punishment in our country is hardly 20% or a little, above, which means that most people, they are able to Walk get free. away. So certainty, हाँ, they are walk free. That's right, right? जो आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले। तो ये बहुत आवश्यक है कि जो सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट है, कि मतलब एक निश्चय है कि अगर आपने क्राइम किया है तो आपको पनिशमेंट होगा, ये हमारे देश में लाना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट इट इज बहुत मोर जरूरी। इम्पोर्टेंट देन द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट। एक आदमी को फांसी देने से जो है मैसेज नहीं जाता सोसाइटी में, लेकिन अगर 9 में से 10 लोग को आप कन्विक्ट कर पा रहे हैं, वो छूट नहीं रहे हैं, राइट? सो दैट इज अ मेजर चेंज दैट इज नीडेड। उसके लिए जो है Needed. हाँ, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन को हमें और साइंटिफिक बनाना पड़ेगा, राइट? जैसे हमारे देश में अभी भी, और मैं अपने देश की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ कि जो इंटरोगेशन इन्वेस्टिगेशन रहा है, वो उसमें ब्रिटिश टाइम्स, कॉलोनियल टाइम्स के से लेकर आज तक कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया है। मैं जब ट्रेनिंग करता था पुलिस में, मैं उनसे अक्सर पूछता था कि आप इंटरोगेशन का कौन सा थ्योरी, कौन सा मॉडल फॉलो करते हैं? तो वो मुझे जो अक्सर कहते थे कि सर वी एक्ट टफ विद देम, और वो निगल देते हैं। तो मैंने कहा कितने वो करते हैं? कहते हैं सर ये तो पता नहीं। लेकिन टीचिंग साइंटिफिक मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन जो है ये बहुत क्रूशियल है। आप अगर देखें कि हमारे अक्सर पुलिस स्टेशंस में कोई इंटरोगेशन रूम नहीं होता, जबकि जब मुझे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कई बार पुलिस रिक्वेस्ट किया है, तो मैं एसएचओ के रूम में बैठ के वो करता हूँ। मैं उनको बोलता हूँ कि मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। तो वो बाहर जो है कोई अटेंडेंट होता है, बोलता है कि ठीक है डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, कोई अंदर नहीं जाना चाहिए। और थोड़ी देर बाद एक चाय और जो है बिस्किट लेके आता है। तो मैंने बोला था कि किसी को नहीं भेजना। तो चाय और बिस्किट तो अलग चीज है, राइट? नाउ जो मैं अगर इंटरोगेशन कर रहा हूँ, तो इट्स अ पावर डायनामिक्स, वहां पे चाय और चाय समोसे बिस्किट का का कोई क्या रोल नहीं करेंगे? है। तो वो जो माइंडसेट है ना, जो सोच है, इस सोच में बहुत बदलाव की जरूरत है।
और ये मैंने देखा है कि अभी जो है, अभी हमारे देश की पुलिस फोर्स, और मुझे बहुत गर्व है अपने पुलिस फोर्स के ऊपर, बिकॉज दे आर डूइंग अ वेरी टफ जॉब इन वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। उनके ऊपर स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, और उनकी जो है साइंटिफिक ट्रेनिंग जो है इन्वेस्टिगेशंस में, पर्टिकुलरली बिहेवियरल क्राइम्स में और क्रिमिनल्स का बिहेवियर समझने में, वो बहुत कम है, राइट? तो ये जो है, जैसे मैं अक्सर पूछता हूँ अपने ट्रेनिंग में कि व्हाट इज द क्राइम व्हाट्स द क्राइम सीन इन अ सेक्सुअल असॉल्ट केस। सर, जहाँ पे क्राइम हुआ है, मैंने कहा नो, द क्राइम सीन इन अ सेक्सुअल असॉल्ट केस इज द वुमन्स बॉडी, राइट? जो ये बेसिक थिंग है, ये हमें ना बहुत क्लियर करना चाहिए कि क्राइम्स में जो बिहेवियरल एस्पेक्ट है, दुनिया के बाकी देश जहाँ पे भी वो कन्विक्शन रेट्स ऊपर गए हैं, वो ऊपर क्राइम है। को एज अ बिहेवियरल क्राइम लेते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? अच्छा, सेकंड जो मैं जी, आपको बता रहा हूँ, मैंने पुलिस का बताया, मैंने जुडिशरी जो है, जुडिशरी में जो है मॉडर्न साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड थिंकिंग बहुत जरूरी है। जब मैं कोर्ट केसेस में टेस्टिफाई करता था, तो जज पूछते थे कि डॉक्टर मित्रा, ये इसने जो है, व्हाई डिडंट शी शाउट, व्हाई डिडंट शी स्क्रीम? तो मैं उनको कहता था कि if a person is traumatized, the verbal parts, the part of the brain that produce speech, वो deactivate हो जाते हैं. It's a research. अच्छा, मुझे नहीं पता है इसके बारे में, आप मुझे भेजिए इसका। तो मैंने बहुत सारे जजेस को लिंक भेजे हैं, उन्होंने पढ़ा है। Now this is not my जी, job. I was an NGO. जी, I जी, was जी, someone who was helping the police. Somebody जी, in the law जी, जी, enforcement and the judiciary, they should be aware, and this is a standard thing now across the world. So to across the world. keep in tune with all that, and doing that is very important, that we take in scientific evidence and understand the fact that women who are victims of sexual assault, उनके लिए उस वक्त चिल्लाना, शोर मचाना असंभव होता है। It has changed the way judges look at the whole issue of consent. कि जो कंसेंट जी, होती है, वो सोचते हैं कि अगर औरत चिल्लाई नहीं तो उसका मतलब है वो कंसेंट दे रही है। नहीं, वो राजी उस थी। उसको चिल्ला इसलिए नहीं रही है क्योंकि इट्स बिकॉज ऑफ समथिंग फिजियोलॉजिकल इन द ब्रेन। जो ब्रेन का पार्ट स्पीच प्रोड्यूस करता है, वो काम नहीं कर रहा है अंडर ट्रॉमा। ये होता है, स्टडीज शो दिस। तो इस तरह से जो है ना, मतलब साइंटिफिक एविडेंस, साइंटिफिक थिंकिंग जो है, मॉडर्नाइजेशन। जैसे मैंने कहा कि हर पुलिस स्टेशन में ना एक इंटरोगेशन रूम होना चाहिए जो साउंडलेस हो, जहां पे कोई जा ना सके, जी, राइट? एटलीस्ट हैव दैट, स्टार्ट विद दैट। तो फिर मैं जब बोलता था, तो अक्सर मैंने गोडाउन्स में जहाँ पे सारी फाइलें रखी हुई हैं, वहां पे बैठ के मैंने इन्वेस्टिगेशन या इंटरोगेशंस इंट्रोगेशन, में। जो भी आप कह ले, किया है। तो वो कहते हैं सर, यहाँ तो पंखा नहीं है, एसी नहीं है, आप यहाँ बैठ के कैसे करेंगे? मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं यहीं बैठ के कर लूंगा। तो ये जो इश्यूज है ना, फंडामेंटली स्ट्रक्चरली ट्रेनिंग उनको देना। जैसे मैं स्वीडिश पुलिस एकेडमी में पढ़ाता था, मैंने यूएस पुलिस एकेडमी में भी लेक्चर्स दिए हैं 2-3 जगह पे। जी, वहां पे अगर आप देखें, लर्निंग इज एक्सपीरियंशियल। जैसे एक क्राइम सीन बना हुआ है, वहां पे दे गेट अ कॉल, ऊपर से जो है सुपरवाइजर्स देख रहे हैं कि वो क्राइम को कैसे हैंडल कर रहा है। हमारे यहाँ एक्सपीरियंशियल ट्रेनिंग नहीं है। इट इज गिवन इन टर्म्स थ्योरेटिकल। ऑफ डूज एंड डोंट्स। एब्सोल्युटली, ये ब्रिटिश टाइम से है, तुमको ये करना है, तुमको ये नहीं करना है, दैट्स इट। उसके आगे प्रोसेस हम ओरिएंटेड अंग्रेजों थिंकिंग के जो है, ज़माने के। वो हमने, हाँ, वो चेंज नहीं किया है हमने। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस की जरूरत है, आवश्यकता है, इन ऑर्डर टू मेक द पुलिस, द प्रिजन्स एंड द जुडिशियरी मोर इन कन्वर्सेंट विद द टाइम्स। अभी जो हो गया है कि पुलिस बहुत डिफेंसिव हो गई है, बिकॉज वो अब पहले वो केस लॉन्च नहीं करते थे, अब जो है वो सारी केसेस लॉन्च करते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, लेट द जुडिशियरी डिसाइड। और जुडिशियरी कहती है कि ठीक है, हमें टाइम चाहिए होगा, हमें देखना होगा। हमें सो दिस टाइम काइंड चाहिए। ऑफ और ये बॉल जो तीनों पासिंग हो रही और है थोड़ी-सी। बहुत, ये जो है, एक ट्रस्ट फैक्टर जो है वो मिसिंग है। मुझे याद है एक केस में जो है, हमने वो पा लिया था कि उन्होंने जो है, जो ऑफेंडर्स थे,
जो सस्पेक्ट्स थे, वी फाउंड दैट दे हैड कमिटेड द ऑफेंस। और मैं और जो एसीपी थे वो फाइल लेके आ रहे थे, और जॉइंट कमिश्नर जो थे वो अनाउंस करने आ रहे थे कि ये केस हमने सॉल्व कर लिया है। तो एसीपी ने 1 सेकंड के लिए फाइल मेरे हाथ में दी, बोला कि मैं एक मिनट वॉशरूम से आ रहा हूँ। तो जो ऑफेंडर की फैमिली थी ना, सीइंग मी, दे जंप्ड ऑन मी एंड ट्राइड टू स्नैच द फाइल, राइट। 4 or 5 women, राइट। अब मैं इतना, मतलब ऑल सेड एंड डन, आई एम नॉट दैट स्ट्रांग टू prevent a whole. You're not Anyway, the ACP police, came you're out not. quickly. No, I'm not police. He just gave it. He says, 1 minute पकड़िए, मैं जरा washroom से आता हूँ. Right? So जी. he came out quickly on hearing the commotion, and he immediately took over. So I said, can't we include this thing that they tried to destroy evidence? He said, अगर हम इसको include करेंगे तो जज बोलेंगे कि the police is trying to make their case stronger by doing so. तो ये जो एक मिसट्रस्ट है ना इसमें कि Between the judiciary and the law enforcement. एग्जैक्टली, तो ये ट्रस्ट फैक्टर जो है ना कई बार बहुत मिसिंग होता है। तो इसके लिए द 3 arms नीड टू वर्क टुगेदर क्लोजली फॉर देयर 3 pillars of the criminal justice system. The 3 arms being the police, the judiciary, and sir, The prisons. and the prisons. Got it. So again, so much to think about, so much to digest, right? And you're right. Like this is, हम अपनी पुलिस को और अपनी लॉ, अपनी जुडिशरी को वो अंग्रेजों के जमाने के जेलर वाली मेंटालिटी में से ट्रेन करके उनके साथ कितना बड़ा डिसर्विस कर रहे हैं। हाउ दे विल क्लियरली नॉट बी इक्विप्ड टू डील विद द लोड एंड द टाइप ऑफ केसेस दैट कम देयर वे। Sure. एंड अभी भी जो है वो लाइक यू मेंशन्ड, लॉ एंड ऑर्डर पे बना हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर पे फोकस जो है वो बना हुआ है कि मतलब जैसे कोई पुलिसमैन हो तो छाती चौड़ी करके जो है आपको वो करना चाहिए, आपसे लोग डरना चाहिए पुलिस से। एक्चुअली इट शुड बी द अदर वे राउंड। पुलिस से लोगों को हाँ, ट्रस्ट होना चाहिए, डर नहीं and लगना police should be चाहिए able, जी। हाँ डर नहीं लगना चाहिए, बिकॉज वो डर अंग्रेजों के इंटिमिडेशन जमाने में से लगता था, बिकॉज वो उस जमाने में जो है पुलिस को सोसाइटी से अलग रखते थे। अगर आप देखें कि पुराने जी पुलिस जी स्टेशंस का कॉन्सेप्ट था कि पुलिस जो है वो पुलिस स्टेशन में ही रहेगी, सो दे आर नॉट सपोज टू इंटरैक्ट विद द पीपल, द कम्युनिटी एज सच। बट ऑल ओवर द वर्ल्ड ये देखा गया कि कम्युनिटी पुलिसिंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ पुलिसिंग, because it's a community which comes to your help when you try to control a crime. So that mindset change is necessary. Yes, absolutely, sir, absolutely. And आप बात करें तो उस वक्त I realized that when I watch international crime shows, and many of us consume so much international content, तो जब भी कोई पुलिस वाली इंटरोगेशन वाली सीन होती है, there is always an interrogation room होता है, हमेशा होता है, right? But I'm most often our police stations don't have interrogation don't rooms. I mean, have that. at least till Yeah. they do it Normal sitting police in stations the don't have SHO it. room, or the normal police stations don't have it. So that very concept Don't that we need have to have it. a separate Okay. room which is soundproof and Ah, all that, that needs to be there. yeah, that doesn't exist right now. Wow. This itself could be an entire podcast कि जुडिशरी और लॉ और पुलिस में क्या चेंजेस की जरूरत है फॉर बेटर क्राइम प्रिवेंशन। वाओ। Sure. अब अच्छा Our इस सब crimes, में our criminal justice. Yes, sir. Okay. Our criminal Please- justice please system carry is on, still sir. offender centric. ये victim centric नहीं है। मतलब offender centric का मतलब होता है कि जैसे offenders को हम ज़्यादा importance देते हैं। अगर आप पुलिस स्टेशन में जाएंगे ना कभी भी, तो आप देखेंगे वहाँ सामने ना एक वो लिखा बोर्ड होता है कि हमें offenders के साथ कैसे behave करना है, शिष्टाचार से बात करनी है, ये करना है, ये करना है। विक्टिम के साथ क्या करना है मैं देखता था कि लिखा नहीं हुआ है कहीं पे। तो लिखा मैं नहीं पूछता हुआ था है। कि आप विक्टिम के साथ कैसे डील करते हैं,
तो दैट इज एट द पर्सनल डिस्क्रिप्शन। तो जी जी हमें जी ऑफेंडर की ज्यादा चिंता है, हमें विक्टिम की कम है हमारे समाज में। और ये जैसे आप देखिए कि ऑफेंडर जो है बेस्ट से बेस्ट वकील हायर कर सकता है, विक्टिम को सरकार से गवाह मिलता है, वो सरकार से वकील मिलता है, राइट? तो जी with all due respect, I mean, when the offender has a right to choose you know say the best lawyer, या why can't the victim choose also a हाँ lawyer? I mean, the fact is that sometimes it is very asymmetrical because you see the best lawyers of the country assembled for the और प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स offender, private practitioners. And I mean, obviously there is more money, there is more incentives in that, so you have some of the best brains working in that, but you don't have the same thing for the victim. So I mean, तो it's very सर asymmetrical. For example, yeah. a layman question here, is the victim not allowed to choose कि कौन उनको रिप्रेजेंट No, करेगा? क्या वो no, असाइन होके ही no. आता है? लाइक हाउ डज दैट वर्क? Uh, it's the public prosecutor who's assigned, because आप क्राइम जो कर रहे हैं वो आप स्टेट के अगेंस्ट कर रहे हैं, नॉट अगेंस्ट एन इंडिविजुअल। तो स्टेट जो है वो आपको लॉयर अच्छा, दे रहा है आपको प्रोटेक्शन के लिए, राइट? ओह माय So in the process, गॉड, sometimes you ओके, don't get the best lawyers. I mean, I'm not saying public prosecutors are bad. ये मेरा या मतलब ऑफ नहीं है, कोर्स, but it is often नहीं नहीं, asymmetrical. Yes. no, that makes complete sense. Like, of course, state should provide a lawyer, but the victim should have the freedom to choose. I mean, I have appeared on both sides. नहीं, तो आपने कहा आप दोनों तरफ से अपियर हुए हैं, तो आई अज्यूम कि ऑफेंडर की तरफ से भी और विक्टिम की हाँ, तरफ से भी। अच्छा, हाँ, कई बार ऑफेंडर की तरफ से भी हुआ हूँ, और कई बार मतलब मोस्टली बाय डिफॉल्ट। और मैंने नोट किया है कि जो ऑफेंडर के जो वकील हैं उन्होंने इतनी थॉरो प्रिपरेशन की हुई है, और विक्टिम के जो वकील हैं वो ओवरवर्क्ड है, ओवर स्ट्रेस्ड है, और उनकी प्रिपरेशन भी इतनी अच्छी नहीं है, राइट? सो इट इज वास्टली आई मीन कैन बी वास्टली डिफरेंट। या और उसी से आई मीन दैट विल डेफिनेटली अफेक्ट द आउटकम ऑफ द केस। I mean, it's not possible श्योर, that that does not श्योर, affect the outcome of the case. श्योर, टू हैव अ Got it, बेटर। got it, sir. तो अभी हम victim centric होने की बात कर रहे हैं, right? So I wanted to focus a little bit on the victims now. We've talked about the changes that should happen in our law enforcement and our judiciary, right? अब थोड़ा आपने extensively victims के साथ काम किया है, victims of different kinds of crimes, trauma survivors. I can't imagine the pain, sir, right? ऐसे लोगों को कैसे उनका जर्नी टू रिहैबिलिटेशन, मतलब उनका क्या होता है? उनको कैसे वो नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ उन्हें कैसे आप वापस लाते हैं, राइट? या ऐसा हो भी सकता है, कैन दे हैव अ नॉर्मल लाइफ आफ्टर सी एक तो अ लॉट ऑफ टाइम वायलेंट क्राइम्स के तो तो सर्वाइवर्स ही नहीं होते, राइट? अगर ये सर्वाइवर्स जो हैं, हाँ, जहाँ तो पे देन हाउ डू यू हेल्प देम टू लिव अ नॉर्मल लाइफ? आई थिंक जो नॉर्मलसी की कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है कि आफ्टर यू हैव गॉन थ्रू अ हुँ, क्राइम, अगर आप एक क्राइम से गुजर चुके हैं, तो आपकी लाइफ वो जो पहले थी नॉर्मलसी, वो नॉर्मलसी नहीं आएगी। आप एक डिफरेंट वे में नॉर्मल होंगे, और ये पॉसिबल है कि आप नॉर्मल हो, प्रोवाइडेड आप अपने क्राइम से, अपने जो ट्रॉमा से आप बाहर निकल सकते हैं। जैसे यूएसए में कॉन्सेप्ट है विक्टिम्स ग्रुप्स का, जो दे गेट इनटू ग्रुप्स, दे गेट इनटू थेरेपी, दे सपोर्ट ईच अदर। So there are almost like I think 1500 or so victims groups in USA. तो हमारे देश में जो है अभी विक्टिम्स ग्रुप्स का प्रचलन नहीं हुआ है, क्योंकि जो विक्टिम्स हैं वो इतने एग्जॉस्टेड हो जाते हैं क्राइम के बाद, and going through the whole legal process, that for them emotional support जो है वो बहुत कम होता है। दूसरा ये है कि जैसे हमें एक सर्विस की बहुत शुरुआत करनी चाहिए, उसको हम कहते हैं विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट। कोर्ट में अगर विक्टिम बोले कि उसके ऊपर उसके क्राइम करने से
उसके लाइफ में और उसके परिवार की लाइफ में क्या चेंज आया है। जैसे एक माता पिता हैं, उनके मान लीजिए देयर डॉटर हैज बीन किल्ड इन एन एक्सीडेंट or say in a murder, they need to say that how their lives have been permanently changed. They need to say it in the court. It is not that their daughter, the person who killed their daughter gets a punishment. This is called victim impact statement, and it is very essential that this is done. ये मैंने बात किया था एक बार विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो उस वक्त कहा था कि हमारे कोर्ट्स इतने ओवरलोडेड हैं, उनके पास टाइम नहीं है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये अभी यहाँ पे चालू नहीं हो सकता। बट विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट से क्या होता है कि विक्टिम जो है थोड़ा सा क्राइम जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के सेंटर में आ जाता है, ना कि पेरिफेरी पे, ना कि एक एज पे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जो है ऐसे स्टेप्स लें जिससे विक्टिम्स एम्पावर हो, विक्टिम्स का हर उसमें रहना। अभी सिर्फ विक्टिम्स को तभी बुलाया जाता है जब उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है, जबकि विक्टिम्स को एक्टिवली जो है हमें एंगेज करना चाहिए। फिर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं ऐसे। एक बार मुझे याद है कि वो एक टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड था जिसके लिए विक्टिम ने कहा था कि अगर आप गए, जैसे मतलब कि मैं गया तभी वो जाएगी, अदरवाइज वो नहीं जाएगी, बिकॉज आई हैड वर्कड विथ हर। तो उसको हम तिहाड़ जेल ले गए थे टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए। तो उसको समझा के कि तुमको जो है मतलब देखना है, तुमको अगर उनमें से कोई लगता है कि ही वॉज देयर, यू हैव टू डू इट। शी वॉज वेरी शेकी, शी वॉज अ वेरी पर्सन। उसका नाम लाउडली अनाउंस किया गया कि वो आप सामने आए, शी रिफ्यूज टू गो। मतलब we after that हमने कितना उसको वो किया, but she did not go in. I mean there are many no sensitivity. एक बार मुझे याद है एक दिल्ली के हॉस्पिटल में सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम को लेके गए थे, तो जो डॉक्टर थी जिसने उसको देखना था, तो वो उसको कह रही है कि तू ऐसे चल के क्यों आ रही है जैसे तेरा अभी रेप हुआ है, तेरा रेप तो एक हफ्ते पहले हुआ है, ठीक से जल्दी आ, मुझे और भी काम करने हैं। उसके साथ जो थे, इट वाज एक्चुअली अ केस फ्रॉम द आर्मी। वो आके मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा दिल किया कि मैं उसको जो है ना, मतलब I really hit her, but she's a woman. So we need to have that sensitivity at multiple levels. मैं सिर्फ पुलिस को या किसी एक ग्रुप को नहीं कर रहा, मैं wider society level पे, including doctors, people who work with them. Everybody needs to show the sensitivity. कितने पुलिस स्टेशंस में कितने हॉस्पिटल्स में देखेंगे जो MLC होता है ना विक्टिम का, उसके that is actually the last priority. मतलब the doctors What are is MLC, overworked sir? and I'm sorry to they are interrupt. overstressed. medical legal case, So what? जहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन जैसे सेक्सुअल असॉल्ट होता है, तो उसमें जी जैसे मेडिकल एग्जामिनेशन जरूरी होता है, तो उसको हॉस्पिटल ले गए हैं, तो जी जी उसमें जी the doctor is taking usually a long time to come. Many cases, I'm not saying in all cases, but many cases doctors take a long time because it is low on their priority. And people come, they look at the victim and they say कि अच्छा ये वो रेप वाली लड़की है। It's a horror experience, it's a horrific experience for the girl. So that sensitivity we need to cultivate, build up. We need to do that at multiple levels for our criminal justice system to work, and all are responsible. Everyone, you, me, everyone. I have to say this, sensitivity sensitivity might need to be taught to people, but insensitivity तो लोगों में free में Sure. है, clearly from what you said. You're absolutely right. As society, as family, we need to learn to be sensitive to victims. That's definitely number one. और हम क्या कर सकते हैं? In what ways can we support victims of violent crimes so that they can stay on the path to recovery? What can we do? I think provide therapy, provide also group support, जैसे sexual assault survivors Group group. support. When you meet together, when you meet other people who have gone through it, when you realize that your problems are not your own, when parents get together and
share the trauma that their children have gone through. ये ना एक जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सलाइजेशन, जब मेरा पेन और आपका हाँ पेन और सबका पेन, वी कैन सी द कॉमनैलिटी, द यूनिवर्सैलिटी ऑफ इट. दैट इज व्हाट आल्सो थेरेपी, रिलीजन टीच अबाउट, कि जितना आप अपने पेन को यूनिवर्सलाइज कर पाएंगे उतना ही वो कम लगेगा. So basically the दैट्स philosophy सो is to ब्यूटीफुल make सर, it वो जो कहते हैं universal. कि गम बांटने से कम होता है। Exactly, right. And do it with a एब्सोल्युटली professional दैट्स who's trained for that. I या used to दैट्स hold वेरी वेल groups सेड। that helped many people to come. Yeah, sure. So are there such groups that are currently active in the country that अगर मैं ऑनलाइन जाऊं और सर्च करूं तो मुझे I'll be able to find them Not to and my join them? knowledge. Not to my No? knowledge. Not to my That is knowledge. Not sad, not sir. at all. No. We tried it. Hmm. We tried it, but That actually is we could sad. not succeed because most of the victims, they Hmm. said that we are so exhausted by this process, we just don't want to be reminded of it. You know, the जो victims हैं यूएसए में या यूरोप में, they are not exhausted by the criminal justice system. हमारे यहाँ पे जो victims हैं, they are exhausted by it. उसके बाद वो कुछ करना नहीं चाहते हैं, एंड दे सेड प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी. ये नहीं है कि हम कुछ करना नहीं चाहते हैं, बट हमारे अंदर वो एनर्जी नहीं है. आप हमें वो सब जो है ना छोड़ थक दीजिए, गए हैं। दैट्स ऑल. वी जस्ट वांट टू बी लेफ्ट ऑन आवर ओन. थक गए हाँ हैं. बस खत्म कीजिए। देयर इज अ फटीग. हाँ सालों साल से चले जा रहा है, चले जा रहा है। एंड आई जस्ट रियलाइज कि ऐसे ही एग्जैक्टली. सिनेरियो में सिर्फ विक्टिम ही विक्टिम नहीं होता, उनकी पूरी फैमिली एक तरीके से विक्टिम हो जाती है एंड एवरीबडी गेट्स एग्जॉस्टेड श्योर. बाय this kind of system that we श्योर. have. दैट्स व्हाई And इट्स, या, it's called a circle of influence. So one victim, there is a circle around it of at least 20-25 people whom it affects. So for sexual assault, it has been seen almost 30 people. So that's why the cost to the nation, जिसके बारे में मैं बता रहा था, is extremely high from the rising of the heinous criminal cases. So ये जैसे एक किसी के साथ कोई crime होता है, जैसे there is a much wider circle that is affected. जैसे निर्भया का केस देखिए, जो निर्भया थी, केस कहना गलत होगा, मैं वर्ड नहीं निर्भया के साथ जो हुआ, हाउ मेनी गर्ल्स डिड इट अफेक्ट? पीपल वर ट्रॉमेटाइज्ड. जो कैलकाटा में केस हुआ है, हाउ मेनी गर्ल्स इट हैज अफेक्टेड? इट हैज अफेक्टेड द होल नेशन. कॉस्ट क्या है उसका? What in terms of the human cost, our thinking, our intellectual ability, our sense of safety that is gone, you know, our lives, our creativity, all that has changed as a result of this. So we as a nation pay a huge cost if we don't address dealing with the heinous crimes. absolutely sir, totally, like कभी ऐसे सोचा ही नहीं इसके बारे में, बट आप कह रहे हैं and it makes total sense because every time something like this happens, एक और वो ट्रस्ट जो है वो कम हो जाता है दुनिया में, ठीक है? Sure. हर लड़की का, Very उसके much, yeah. पेरेंट्स का एक और वो आइसोलेशन और बढ़ जाता उसकी है फ्रॉम योर सहेलियों का. कम्युनिटी। तुम और अपनी बेटी को कहीं नहीं भेजोगे, तुम और अपने, एंड इट्स नॉट जस्ट, Sure. अगेन दिस इज ऑल्सो समथिंग आई वांट टू डिस्कस, इट्स नॉट जस्ट बेटी ऑल्सो, एक तो वो भी, हम शुरुआत में पेडोफाइल्स की इतनी बात कर रहे थे, Yeah. ये जो डिस्कशंस हैं ये काफ़ी कई बार वन साइडेड हो जाती हैं विथ victims largely and overwhelmingly being of one sex and that is female and perpetrators largely Sure. being of the Sure. other sex, right? Yeah. But Sure. Yeah. Yeah. child sexual abuse may, there is also quite a large number of little boys that it happens to. Yeah. Is that correct or Yeah, is that that's right. misleading? Yes. Yeah. That's That's correct. No, that's not misleading. That's a large number of boys, but Hmm. overwhelmingly large, it is still for girls. Yeah. Acha. Overwhelmingly, The majority it is is still still girls, little but girls. Yeah. little girls. There are Wow. young And the boys, and perpetrators, when it comes to, huh.
And the perpetrators, when Yeah. when we talk about pedophilia, are the perpetrators still largely male, or is there women Yeah, pedophiles are also largely there, male, females? largely very few, Largely very men few. I mean, again. almost Yeah, negligible. right. Largely men, yes. Almost negligible. राइट बिकॉज आजकल एक तो ये भी Yeah. होता है कि व्हेन वी हैव दीज काइंड ऑफ डिस्कशंस राइट ऑफन इट also gets hijacked by the other discussion. Oh, it also happens to men, and while it is true, it's true and it should never Hmm. happen to anybody, right? The Sure. and this happening to any gender, men or female, should be treated with as much Yeah. kindness, care and swiftness Sure. as possible. But it is the Sure. truth is still that it is the perpetrators are Yeah. largely male and the victims are largely Male. females. Sure. Exactly. Wow. Okay. Yeah. I think Yeah, that's violence is a something I male wanted to talk about. violence जो है वो male prerogative है, right? And that has always Psychologically, remained so what throughout is this history. about, sir? Throughout history, I think right? So, s- yeah. I think yeah, there is not one reason, but I think young boys are taught to deny their emotions. That's one, right? So they are taught to deny their feelings, their emotions, and they are made to detach, from their, and also in terms of values, in terms of moral values, particularly, they are taught it's very different. There is nothing, I would say, biologically that has been found that predisposes a boy or a young man to violence, right? But I think environment plays a very major role in terms of predisposing them towards committing violent acts. Yeah. So in this case, it is I mean, much I have more seen that nurture than it is nature. exactly. It Wow. is. Okay. Yeah. I Okay. mean, That's something to it think is. It is about. much That's more. something It to is much think about. sure. Yeah. So, So, matlab, we can like for definitely example, if you see, yeah, please, sir. uh, in societies where men are encouraged to bring out their feminine side or affectionate side or sensitivity, violence against women is much lower. So as we know in psychology that everyone has two sides, a masculine side and a feminine side. The masculine side by and Ji. large is said to be outward. The feminine side is said to be compassionate and caring. Once we develop that side in children and let it grow, so that growth of feminine side, and Carl Jung talked about it a great deal about the lack of development of the feminine side in men and how it has contributed towards violence both at a micro and macro level. Alice Miller is another psychoanalyst who has talked about the overemphasis on the masculine side. Like for example, Germany, they call their country fatherland. They don't call it motherland. And Germany has had two world wars in the last century, right? They don't call their country motherland. They call it fatherland. It's the only country in the world, right? They do so. And studies. That's the yes. I'm not saying Germans are bad. Don't. I'm not doing that. But German German children, particularly male children, are taught to deny. Were taught to deny, I would say, their feminine side, their affectionate Softer side, side. very Yeah. much. So the softer side, yes. And now they have Right. rectified it because I have worked a lot I've gone to Germany many times. I have many German colleagues who are psychologists and psychiatrists, and they discuss that, it's an important aspect that they are aware of, and, bringing about a change at a macro societal level to make the feminine side in German men stronger, and that has helped actually a great deal. So
In a similar way, I think perhaps we also need to look at wider societal methods by which we can develop the feminine side in men so that they become more compassionate and less violent. In men. Yes, in men. That's a great point. So that's a great point. Yeah. Right. यहाँ से मैं थोड़ा सा एक मतलब रिलेटेड फील्ड में हमने इतनी सेक्सुअल असॉल्ट और हाइनस क्राइम्स की बात की है इंडिया में सेक्स ट्रैफिकिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग is still a big problem, right? I Hmm. mean, I think it's a problem globally, It like is. US Yes. वगैरह में भी है, पर Yes, अपने it यहाँ is. काफी है और आपने Yeah. उस पे बहुत काम किया हुआ है, right? तो उसके बारे में थोड़ा बताइए सर, how big When is we, this problem and what are we doing as a society, as a country to about it? it is big. I mean, we used to when I used to work with police in a more active way, then we used to get Hmm. women who and also men who were trafficked for sexual, for exploitative purposes. So the problem is huge, because you know, but poverty is not the only reason. Most often it is said that it is poverty, but that's not true. Uh, uh, it's the value for the child, it's the value for the person, which is very low. So if someone is taken away, it is not something that is recorded or something that is taken care of, right? So yes, human Right. trafficking is a major issue in India, and yes, the trauma to the victims, the trauma over for them is extremely high. That's again, it is as much, maybe more than the sexual assault victim, right? So we carried out several studies to understand the nature of the problem, and the thing is that United States recognizes human trafficking as a major issue, and they do so because it affects their country. Because hundreds and thousands of people are brought in illegally in USA, and it is a major issue, particularly sexual trafficking. So therefore, they have a whole department to monitor human trafficking, Hmm. and they classify countries. I mean, which is I think quite absurd, according to tier one, tier two, and tier three. And India has been mostly on tier three, but sometimes on Right. tier two, as far as its progress and human trafficking is Hmm. concerned. So it is a huge problem. I mean, I'm Concerned. repeating myself over here. There is no doubt about it. Yeah. And am I correct in believing that a lot of times it's children who are trafficked, right? Yes. Sure. Yeah. Hello? It is children who When are we talk trafficked. about this human trafficking, Human like a trafficking large is number an is children. yes. Actually, most of it is Sir? children because they are easy to traffic, Hmm. and it's a crime of zero Hmm. investment. I mean, you invest nothing. All you have to do is pick up a kid and then take the kid and then sell it off, right, for a huge price. So your investment is almost zero, but the profit is huge. So, that's one. Secondly, children are more vulnerable. And in our country, the missing of children is not really recorded, investigated properly. You know, like if you would go, for example, to register a case, and I'm saying across India, many places you will be told that dekh lo kahin kho gaya hoga, bhag gaya hoga. They don't investigate it, and actually only a very small percentage of children are recovered, not more than 25-30%, of 354 cases. So the answer for the law enforcement is that we can't do anything. It's because we, as a society, we don't really can be said to look after our children and care for them. Value. Secondly,
value. And also, like for example, for sexual trafficking, children have a higher value than older women, because of a lot of societal myths, stupidity, that having sex with a child can cure you of impotency, or having sex with a child can bring certain, can propitiate a goddess or something like that. So yes, for example, the uh, you must have sex with someone whose mind is innocent, right? So that's sometimes propitiate a higher power, right? Many tantric and Kabbalic beliefs, they are in that range. So that's why children are that. Also, probably many places they don't see children as children. Like if you see, for example, a large, and that is true with not India alone, a large part of the world does not see children as children. Like for example, in say Iran, the first thing Hmm. Ayatollah Khomeini did when he came to power was declare 9 as the age of marriage. Today, the marriage of age in Iran is 12 or 13. Okay, so a child is not considered a child, is considered half an adult, right? In certain communities, in certain religions, childhood is a very Western concept, in that sense. I mean, so in our country or in many other countries, children are not really seen as children in the way you are describing, but they are seen as, almost on the way to adulthood, have reached adulthood, and sexuality is the bridge that will, make Hmm. that happen. So it is not, they're not seen as children. That's a deeply unfortunate fact in several That communities. is, A child who has attained puberty is supposed to be considered a woman ready for marriage, right? So then it is the religious values and the law over yes, there that are in is true. conflict. And if the society, places more important over that, as certain communities in our country do, then children get trafficked, children get used, and they How are will you change very anything? vulnerable. I think by making strict laws, and That, I think the uniform civil code, I mean, is it's a very important thing, because there should be the same law for all of us in the country as far as criminal laws go. So for example, you define a child as someone who's less than 18 years of age, period, right? Okay. And the laws should right. apply equally to all religions, to all places, and the punishment should be swift and just, right? Okay. Now, there are Yes. antiquated ideas that, for example, follow. Like 2000 years back, the Catholic Church declared seven as the age of reason, which means at seven, you actually form a rudimentary personality and you are ready. So that's why even today, a child below seven cannot be prosecuted for a crime. I think you know that. Yeah. So, but the concept comes from 2000 years back, Did not know right? that, but So, the concept of a child, wow. the concept of a child is someone who's irrespective of race, community, religion, is someone who should be treated equally, period, right? So, this uniformity, is something extremely important in our country. We cannot have relative values as far as children, crime, or other issues are concerned. Hmm. Yes, religious values और beliefs और things like कि हाँ ये community मानती है कि 12 की एज में तो मेरा बच्चा adult हो गया, those kind of things should have no bearing on the law. People's No, sentiments can go no, to hell, no, so far no. as I'm concerned, at least. Yeah, I knew someone who was a human rights worker from Pakistan, and she used to say that Hmm. the rule that you need to have four witnesses to prove a sexual against you, four men, right? That's the reason why you hardly, you know, many sexual assault cases were not registered as a result of that, according to religious, dictates that for a woman to Religious prove rape beliefs, or because sexual assault, she needs to. Yeah, so she used to say that, how she wished that it you were have not four true, witnesses. because if you don't, then, the woman is held as guilty. And so therefore, many women don't come forward because they're Hmm. so terrified, right? So, I mean, one thing which I feel is that religious beliefs and ideas actually should be
pushed to the background, and scientific, evidence-based, beliefs, laws should be put in its place for every country. No, absolutely, absolutely. Especially when it comes to violent crimes like this, which affect Yeah. the society so severely Sure, and for such and causes so much trauma. sure, Right? मतलब यहाँ तो there shouldn't be a sure, question only कि oh can we entertain sure, people's individual beliefs? No, you can't. The cost to the nation and to the society is too high. sure, Right? So sure. yeah, I'm still reeling a little bit from thinking about how we are endangering our own children, you know. And it's a very sensitive subject, Yeah, child security for me. sure. Yeah, women's security. I mean, Yeah, everybody needs to have safety and security, but child security is big. Okay, sure. It so affects our parental I'll instincts. go to the next set of discussion points. Yeah, yeah, absolutely, absolutely. That. So we talked so much about so many different uh, subjects. We talked about violent crimes. We talked about what we can do to prevent them. What kind of changes we want to see in the society, in Hmm. the judiciary, right? But this all started with this conversation is happening because you are a clinical psychologist with 30 years of experience in your field, Hmm. and we need more people like you. Yeah, So, what do you want to say to yeah. young people who are maybe looking at this podcast and who want to get into the field of clinical psychology, right? Like, what skills should they possess? How can they get started on their journey? I think to I'm I'm trying to teach my students. I teach clinical psychology. I teach forensic psychology to my students, and I know that many of them want to be clinical psychologists and forensic psychologists. To be a forensic psychologist or clinical psychologist, I would say that you need to be a forensic or a clinical psychologist in some respects to work with society. You need to have a deep sense of that you want to do something for justice in society. Like as a psychologist, particularly working with victims, often what I would realize is that I'm the part of the worst hour of their lives. You know, I'm there, the worst period of their lives that I'm there. And there is no other satisfaction that can equate that. It is not monetarily paying, it is modest, I would say. I worked as with grants for our organization that helps us to cope, but the strong desire for justice, the strong desire for seeing uh, wrong being righted is, I think, what you need to have if you want to be a good clinical psychologist or a good forensic psychologist who works for community, who works for society. That's something very important. Of course, there are clinical psychologists who work in corporates, who work in institutions and organizations, who earn a lot of money. I also had that chance. I also had that opportunity. I did not take that. I wanted to work for people. That was a very distinct choice I made, and I don't regret that choice at all. I'm very happy with what I have chosen. Uh, Even 25 years later, people I worked with come back suddenly to me and say that, you said to me on that day this thing, and that changed my life, and I am totally lost. I'm saying, okay, who are you? What did I say? And they say that you said that. I said, okay, you have to excuse me. I don't remember. I'm getting old and I don't remember that this is what I said. No, sir, you said that and you affected me so much. So to pass it on the legacy and to see that the society changes even in a very small microscopic way as a way of result which can get amplified later, I think is a very satisfying feeling that you can have. And that is why you should become a clinical psychologist or a forensic psychologist. That's what I would feel. Yeah. Thank you for making that choice, sir. I'll also say, and you can correct me if I'm wrong, that Yes. clearly empathy
is something that would help. Like if the people who Sure. want to go It's into your field have a level of empathy, that might be helpful. many years ago, my professor, mentor, and teacher, Professor George Colorize, he told me that separate person from behavior, separate the person from the behavior. So that has helped me to work with uh, offenders, killers, terrorists, see their behavior that needs to change, separate from that, and help them, with that. I don't see any person as evil. I see that evil is something that may be existing as part of his behavior that can be corrected to some extent, changed for the society to become safer. So I think that's why I made the choice, and I would say that if anyone wants to make the choice, please don't do it because you want to reform the society, because that's a very idealistic and very huge goal. You'll get frustrated very soon. Be pragmatic, be realistic, and go ahead and try to do what you can, because when you work like that, remember, you become the voice of victims, you become the voice of survivors, and that is something that you can never let go. You speak for them. And I'm haunted by people who whose voice I became. And some time back, this publishing house approached me and said that, "Do you mind writing about their stories?" I said, "Sure, I will." They said that we heard you at one place, and those stories can be inspiring for others. So I'm writing a book right now based upon that, and I hope that it will be the the name of the book is The Language Behind Silence, and hopefully it will be finished next year. I'm taking 25, 20, 27, sorry, of the people that I have worked. So, 27 people that I've worked with across the world who have not only taught me about the human nature, human condition, but about also what goes on in the world at large. See individuals in relation to the society, the way they are bound, the way they transcend that, and the fact is that how they choose a different option in order to make their lives better or make others' lives better. So that's what I am writing right now. I'm caught up in, and I hope that it will come out next year. Yeah, by somewhere around September, October, same time this year. I'm waiting, sir. I'll definitely be reading that book once it's out. And such a Sure. such such an Yeah. important thing to do, telling those stories. But before Sure. we end this podcast, there's two things that I want to talk to you about, ask you. एक चीज तो जो मुझे आपसे पूछनी है कि Sure. सिंस आप बुक्स लिख रहे हैं, सिंस यू आर राइटिंग अ बुक उन कहानियों पे दैट हैव चेंज्ड योर लाइफ, राइट? Sure. क्या ऐसी कोई कहानी है जो आप हमसे भी शेयर कर सकें, व्हिच हैज स्टेड विथ यू? डजंट हैव टू बी वन ऑफ द बुक, मे बी Uh, नेम चेंज करके, there's समथिंग दैट हैज स्टेड विथ यू दैट यू कैन शेयर विथ अस. mm, I think I would say almost all the stories have stayed with me. So it's very difficult to, kind of take one particular, but maybe, one story I remember where my friend and we worked with a man who was planning to go outside India to become a terrorist. And my colleague, he spoke with him at length to not do so. He was from his community, from his religion, and almost I think uh, 15 years later, one day at an airport, there's this young man with a tie, very handsome looking, came up to me and almost touched my feet and said, "You are Dr. Rajat Mitra." I said, "Yes." He said, "Do you remember you spoke to me, you and your colleague?" And then I immediately recalled what he had, because he had given that. He said, after that I gave up that idea to go ahead and become so, because your colleague spoke to me so persuasively,
and you also, helped in, and I said, okay, I will not do so. You were sent by, your colleague was sent by God to me at that time, and I think it was a divine intervention that you came to me at that time in my life. And I am an insurance agent right now. I'm doing very well. I want you to know that. So I recalled, I mean, I could not see any connection between him and that boy, bearded, aggressive, whom I had seen, He so was many years ago. So he was clean shaven. He was glowing, very handsome. With jacket, tie, and everything. And I just thought of the change that can come into people. I never knew about him. Actually, we both thought that he's gone, and we felt very depressed and low about it. That he would be gone, his family would be destroyed, his wife and daughter, would be living by themselves. But he had changed. He had taken care of them. He had stayed back. So the power of human transformation is definitely there. I'm not saying that you can have that as a philosophy, but everyone, one out of many people who you will work with, they will become like that, and they will keep your faith alive. wow. So That that's a case that I remember. so I thought, yeah, no, I mean, इससे अच्छी स्टोरी नहीं हो सकती थी टू रैप अप द पॉडकास्ट बिकॉज अगेन sure, हमने इस सब्जेक्ट पे बात नहीं की पर आपने डी रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ पे भी काफ़ी काम किया है विच इज़ वाई आई कीप सेइंग कि आपके साथ एक और करना होगा पॉडकास्ट बिल्कुल। होगा बहुत जल्दी होगा जिसमें हम ठीक हाँ है, करना ही ठीक पड़ेगा है, जिस पे हम ठीक इन है, चीज़ों के sure, बारे में भी बात करेंगे बट आई एम ठीक सो है, ग्लैड टू sure, hear this story and what a sure. perfect moment to wrap up the podcast, sir. Thank you so much Thank for you, all the thank information you. that you gave You're welcome. us and sir मतलब कहते हैं लोग हमेशा कि privileged to have you on the show but such a privilege to have you on the podcast और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम जो भी आज हमने बात की है उसे हम अच्छे से पैकेज करके हर जगह पहुंचा सके because ठीक है, everybody needs to see this ठीक है। everybody needs to see this uh, so thank you so much Dr Mitra and we will connect again in another podcast. Sure. Yes, we will do that. My pleasure. It was great talking to you and sharing. Yeah, okay. Thank you. Thank you. तो ये था आज का पॉडकास्ट अगर आपको भी ये पॉडकास्ट उतना ही ज़रूरी लगा हो जितना कि मुझे लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके ज़रूर पहुंचाएं। हमारी सोसाइटी में वायलेंट क्राइम्स के बारे में एक नॉलेज क्रिएट करने की ज़रूरत है विक्टिम्स के बारे में भी और जो इनके ऑफेंडर्स होते हैं उनके बारे में भी ये आज के पॉडकास्ट में साफ कर दिया है तो इस पॉडकास्ट को शेयर करके और लोगों को भी इसके बारे में समझाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए और ऐसे पॉडकास्ट बना सकें रिमेंबर सब्सक्राइबिंग आपके लिए बिल्कुल फ्री है मेरा नाम अमृता है और मैं आपसे अब अगले पॉडकास्ट में मिलूंगी तब तक के लिए बाय